स्टार्ट। ये नंदन कोई Okay. सी भी पिक नंदन ये कोई सी फिनिक्स book का हर page बार चालू हक करके देता दिखा है, रहा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पे ही हक देता है। ठीक है, so hi everyone, we are gathered here to discuss Greg Egan's Axiomatic. Finally. Axiomatic, it's the book we are discussing. Nothing that is correlated with any other species of people or ठीक है. So we're discussing Axiomatic, which was my choice for the Pineapple Ilachi Book Club Book of the Month for the month of November. और इसका डिस्कशन होना चाहिए था 14 दिन पहले, but somehow we've made it here, guys. It's an achievement that we've made it here, क्योंकि बहुत पोस्टपोन करके और मेरा भी बुक खत्म नहीं हो रहा था. It's good that we've at least made it here. अभी हो गया क्या खत्म तेरा? We'll assume assumption के बेस पे साइंस होता है, तो we'll assume कि मेरा बुक खत्म हुआ है. तो वो assumption को लेके we'll create an ideal scenario where we proceed with this discussion. Okay, so the reason for choosing this book was कि as you know that I am a science fiction fiend, और मेरे को देवल ने बोला था चूज कर सुमित, तो मैं जल्दी से मेरा गुडरीड्स टू बी रेट पे गया एंड वहां पे मिला मुझे, अरे दिस लुक्स गुड एंड दिस इज शॉर्ट फिक्शन, तो यू कैन it's easier to digest for everyone. You can read like one story, multiple stories एक के बाद एक, space out your reading that way. So before we start into a discussion of the book, like एक छोटा सा ये खेल रहा है मेरे को. I'll just share my screen. ये पता है एक्सपेरिमेंट लोगों को दिख रहा है? ये नहीं पता यार, दिख तो रहा है पर ये क्या दिख रहा है। हाँ, ये स्टार्स दिख रहे ना. हाँ रुको, पोकेमॉन गेस नहीं करना है. इफ आई से द वर्ड, इट्स अ फेमस एक्सपेरिमेंट, बट इफ आई से द वर्ड, अपने ग्रुप पे जाओ, व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप खोलो पहले, इसका पाइनएप्पल इलायची का. हाँ, इफ आई से द वर्ड कीकी, KI, तो इन दोनों में से कौन सा you think is the sounds like a kiki? So just vote on that. And don't be influenced अपना बाकी लोगों से. मल्टीपल सेकंड ऑप्शन पहले ये कुछ लोग जाके दोनों जगह वोट कर रहे थे. हरामी तू ही कह रहा था सबसे पहले. मैंने नहीं किया, मैं बता रहा है तेरे को. ये करना क्या है? ये हमेशा ऐसा करता है. एक मिनट. फ्री बॉडी में भी 4 टाइम कर देते हैं और सब में यस कर देते हैं. सबमिट करना क्या है? ये देखो, एक मिनट, एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे हैं अपन, where when I say there are 2 words, kiki and booba, right? BOUBA. So you just have to guess अपने ग्रुप पे जाके, पाइनएप्पल इलायची पे जाके, just guess which word sounds like a kiki and which word sounds like a booba or baoba. So you just have to vote for kiki. Kiki ये word सुन के क्या सोच? हाँ, other option is baoba, like one of those two is a baoba, but which one do you think is a kiki? Is one a kiki? One is on the left and 2 is on the right. तो बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना, अपना खुद का इंडिपेंडेंट ये रखना. वोट करके बाहर आ जाओ. I'll just stop screen sharing now. माइनॉरिटी में कर दिया वोट. Okay. तो उसका ये भेजता हूँ मैं. So the overarching science of this is कि क्या की डेवलपमेंट डालता है. Over the cultures and over past several years, like over past 60-70 years, this experiment has been done with various cultures across languages, across English speakers, native English speakers, Tamil speakers,
uh, African tribes, and overwhelming majority, like you can see over here, अपना 70 to 30% का majority ये है. They think of the first the star shape as Kiki, which has it has a sharp thumb, and the second shape as Baobab, which has a softer kind of sub. Amoeba. So, so uh, this is what I thought when I thought of this book as a whole. Like, if you go to if you see individual chapters one by one, if you space it out, it won't make that much of a ये पैटर्न उतना दिमाग में आएगा नहीं. बट फॉर मी साइंस फिक्शन इज आइदर अ कीकी और अ बोबा और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो कीकी फॉर मी इज लाइक it's hard turns, very technical languages, and it's hard for anyone to get into. But once you, and some people might like that, and some science fiction is about it's more internal, more emotional, and it shows the inner turmoil of the character. So ye book mein we saw a lot of stories which were a concept, which were a mixture of Kiki and Boba, but hard Kiki, the ones I liked are very hard Kiki kind of stories, very hard technical stories. Mostly because the writer, वो उसके बारे में बाद में आते हैं, उसके ऊपर बाद में आते हैं. But there are few stories which I really loved. Some were okay only. I did not dislike any story. Sometimes it got too medical for me. So like बहुत medical stories है यार. So yeah, that was my theory. उसके ऊपर से we can open up the discussion अभी, and I'll you can just talk about one story, and then we can discuss that one story. We don't have to go in order. We'll start with the first story, if you don't mind. Okay. So Yeah. I think Vishwesh का भी favorite story वही है, and I think वो Assassin's Creed है, मतलब वही Infinite yeah, Assassin. The Infinite Assassin. Plus one. Yeah, वही. First one, Infinite Assassin is the first one, and probably one of the top 3 for me. Same. Yeah. Like you guys go ahead. चिन्मय बोल क्या लगता है? What do you think of the story? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब स्टोरी पे तो बाद में आते हैं, मतलब इन द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना शॉर्ट स्टोरी के स्पेस में द वर्ल्ड दैट दे वर एबल टू बिल्ड, दैट ग्रेग ईगन वाज एबल टू बिल्ड, वो मुझे बहुत ऐसा मतलब लव डेथ एंड रोबोट्स में कुछ एपिसोड्स होते हैं ना जिसमें ऐसा डिस्टोपिया दिखाते हैं या समथिंग लाइक दैट, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न एंड ऑल. सो वो मुझे बहुत सही लगा. दैट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी अपील टू मी वेरी मच. एंड अगेन मतलब स्पॉइलर में तो हम जाएंगे, बट टुवर्ड्स द एंड जब सारा कनेक्ट हो रहा था, द ग्रिड ऑर्डर एंड व्हाटएवर, द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स एंड ऑल ऑफ इट, सो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा. एंड द आइडिया इटसेल्फ कि आपके मल्टीपल वर्जन्स होंगे एंड दे आर गोइंग टू फिक्स अ प्रॉब्लम एंड none of them is going to deviate the character that we follow throughout the story. So concept wise भी मुझे बहुत सही लगा. And आंसर मतलब मैं शुरू में सोच रहा था, I knew कि one of the stories would be axiomatic because the name of the book is axiomatic. But मैं ऐसा पहला स्टोरी पढ़ते हुए सोच रहा था कि the theme of being axiomatic should apply to every story or not. मतलब कि कुछ चीजें And then ऐसी हैं जो चेंज नहीं what is होंगी. axiomatic? What is an axiom basically? Axiom is basically मतलब ऐसा एक रूल है, अनसेड रूल कह सकते हो, या ऐसा रूल जो इट्स वेरी हार्ड टू चेंज. मतलब कुछ भी हो जाए तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू रीच दैट कंक्लूजन ओनली. मतलब नो मैटर व्हिच रूट यू टेक, द आउटकम इज गोइंग टू बी सेम, लाइक एन एक्सियम. सो मैथमेटिक्स में पोस्टुलेट से एक्सियम ऐसे बोलते हैं. सो इन दैट सेंस आई वाज लुकिंग इन दैट सेंस कि भाई इज इट मतलब इट अप्लाइज टू द सेकंड स्टोरी एज वेल कि मतलब the outcome of the win or lose battle that is shown in the story, they are saying कि जो भी होगा मतलब equally likely है कि आपका the protagonist thinks that he is winning every time and that's why he is being chosen, and then it's revealed that it's not the case. There are multiple possibilities and multiple interpretations of the same event that he's just not aware of. So as a concept मुझे बहुत सही लगा वो, और डिटेल में जाएंगे तो we can discuss it more and others can also chime in at this point. Yeah, I also liked कि
visualization इतना strong था मेरा, like it was very Yeah, into the yeah. Spider-Verse kind of, as a multiple layers coming on top of each other. Exactly. Yeah. Sorry? I did the homework. I made notes. अरे यार, Can ये अच्छा लगता है. but so I broke down the. I'll say, like, giving other than the summary, I'll just tell what the parts I liked about it. Okay, so I'll break it About down the book or this story? thematically. The story. I'll अच्छा. break it thematically and I'll break it technically. Okay. The thing, there's only three things that I love thematically. The first is the idea of free will. I think that, especially when you consider that in infinite possibilities, that entire line that it's just a rationalization and I can't help but take all the rights and do all the wrongs, just very strong. It also connects to my third part, which is that he could have been an existential writer with Yeah. Nietzsche, because I went back to Nietzsche and then I read there's this part, okay guys, and he talks about the hardest burden, Nietzsche, where he says that if I give you the chance of doing all of this again, exactly how things have happened in sequence in your life, would you take it? And it just, by the end of it, it also made me feel, when we come to the end, that this is what also the writer instructed, like just to poke holes the idea of choice and the idea of conformity. तो मैं तो ये दो चीजें, and then also मैं तो बहुत call out हुआ because that entire S पे लेके dreamer वाला felt like कि you are creating an idealistic version of yourself and people are creating like these are the lives they could have had, और फिर मैं सोच रहा था fuck, this is what I do every day. So that is the thematically why I really liked it. The technical is कि the visual imagery is so strong because this idea of concentration wala na, coherence, concentration, कि चाहे वो parts of your body have gone but you can resemble a shape. Do you guys remember when you go with a car, like you are sitting in a car and like the railing would pass by, you don't remember individual railing जो side में road के Yeah, होती है ना, you it's remember one blur, right? it's concentrated, which made me realize that you can use this story to teach stable diffusion to kids, because that's exactly also how deep latency works, where you are essentially you're going towards coherence, and that's also wo imagery. It reminded me of 2020 AI edits using stable diffusion. So yeah, these are the parts that I like, and also the idea of time as being like a river, because there's a downstream and there's an upstream. So You're not talking about stable diffusion, the software, right? no, The concept. no, I mean, The concept of physics or the software? Yeah. no, the AI thing of how we generate Yeah, right, images. Acha. That, So, yeah, no, hi, you're saying it can be used to teach yeah, because AI in general to people. no, I meant like there's this part, okay, the idea of there's this visual imagery in it, जिसमें वो बोल रहा होता है कि it's almost like कि like that your parts are flying, you're just doing एक के पीछे एक. If you remember 2018 2019 edits with stable diffusion, these are exactly what every frame में difference है. You get what you're talking about with spiders also, the chromatic aberration. Every frame is different. It's chasing coherence, it's not chasing what is right or wrong. So I just really like that imagery to teach coherence in AI, and it makes sense because I went and read about him and उसने AI पे भी बहुत लिखा है. So yes, these were my points. Thank you. Very good points. Like, as thinking from a writing perspective, I feel it is really hard to write something that is so visual. And after, because you've been inundated with multiverse, सब जगह वही है, right? And this is such a fresh take, even though it came out 30 years ago. मतलब, I'm amazed at how that there are still stories to be told in that realm of that high concept physics ka multiverse mein. I think Vishwesh also liked this story. Vishwesh, you're here. First story. But in general about the book, it's a mixed bag for me, क्योंकि मेरे लिए क्या हुआ ना, most of the time, all the stories, what a general feeling which I got was they are very heavy on plot and science,
but very loose on characterization. Yeah, I mean, characters build ही नहीं किए किसी भी stories yeah. में. I never understood the motivations of the characters, right? But the only motivation was weird science. And so that was a big kind of the only letdown for me. मतलब जब मैंने Yeah. वो luminous और dark integers वगैरह पढ़ा तो I was completely confused because I felt stupid कि मेरे को math और physics आता ही नहीं है कुछ when I read those stories. But then I went back and read the introduction. तो इंट्रोडक्शन में एक्चुअली उसने लिखा हुआ है कि देर आर नो रियल वर्ल्ड साइंस बेसिस फॉर एनी ऑफ दीज स्टोरीज. पर कुछ तो होगा। क्योंकि तब इतना jargon है उधर। But yeah, I too felt the same. It's very loose on characterization. ये तो मैं बाद में आने वाला था, but since Vishwesh pointed it out, that's one of my main problems with the book in general. Like every character, all the stories are in first person perspective. And to what extent it is author's responsibility to educate the reader, right? To Educate as in? understand कि भाई चल क्या रहा है. What any concepts which you are using or whatever you are trying to build, like world building में जो if you see the big novels, they spend so much time in world building because they are actually spoon feeding, educating the reader कि what to Correct. expect, right? And ये सारी चीजें तो ये करने का short stories में शायद chance नहीं मिला उसे. मतलब see very loosely quantum dimensions मतलब ये चीजें इतने loosely use हुए हैं सब जगह where you need to understand the context in which they are getting used, and it's very hard to just skip. मतलब ये सारी stories ऐसी है कि you cannot just skip over the confusing part and still enjoy the stories. मतलब इसमें अगर तुमने वो साइंस वाला पार्ट स्किप कर दिया कि नहीं भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, तो वो स्किप कर देते हैं. बट देन देयर इज नो इसेंस टू द स्टोरी. फिर वो जान ही निकल जाती है पूरी स्टोरी की. So that's why I felt that education aspect was important. अभी अपने यहाँ पे जो सारे रीडर्स है शायद उनको उतना एप्टीट्यूड है, उतना उनका नॉलेज है, तो दे कुड रिलेट, या फिर उतना साइफाई पढ़ा हुआ है, so that's why they could actually understand some of the concept. But if this is definitely not a beginner sci-fi for sure. नहीं, I agree with all of your points. Firstly, like that, those are the problems I had with the book, especially when you're getting towards the end, because all the stories are written from first person point of view. So all the voices sound the same. मतलब despite of their gender, of their age, of their social status in life, all the characters have the same voice, same author's voice, and they have the same inclination of explaining the world to the reader, right? And everything is in past tense also. So when it works beautifully. Like for the first two stories. Do you think कि मतलब if you would have altered between first and third person storytelling, it would have helped? Because मेरा closest example to this is Ted Chiang का short story वाला book. So इसमें उसमें क्या होता है, some stories are first person, some stories are third person, and when the altercation happens ना, you are actually paying more attention कि अब this is a completely different story, this is a completely different, मतलब every story is different. But do you think it would have helped if some stories were kind of different? Some stories, yes, not within a story, because not within a it is story, really hard for writer may write it, but it is really hard for the reader to grasp कि ये कौन सा narrative shift हुआ है, and if he's justifying मैं it वही कह and रहा हूँ between stories. वही कह रहा हूँ मैं, not within the story, but एक story first person में हो गया, हाँ fresh तो लगता था, like हाँ थोड़ा freshness लगता है ना उसकी वजह से. निखिल भाई, निखिल भाई हाथ खड़ा करें. हाँ मैं बस ये I कहना love चाह your रहा था. t-shirt also. Sorry. Thank you. निखिल भाई का टी-शर्ट is Ayushi's background.
That's also true. अच्छा तो हाँ मैं ये कह रहा था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट मैंने ज़्यादा साईफाई पढ़ा नहीं है, बट जितना भी पढ़ा है कैरेक्टर डेवलपमेंट इज अ कांस्टेंट प्रॉब्लम अक्रॉस Yeah. ऑल साईफाई बुक्स कि एंड इज इट लाइक एक्सेप्टेड बाय द रीडर कि भाई इतना प्लॉट मिल रहा है, इतना साइंस मिल रहा है, इतना हाई कंसेप्ट मिल रहा है, तो अब कैरेक्टर डेवलपमेंट तो नहीं मिलेगा, सारे लोग एक जैसे हैं। मतलब जस्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, मेरा कोई कॉमेंट नहीं है कि पीपल हु हैव रेड मोर साईफाई देन मी, आर देयर एनी नहीं नहीं, बुक्स इट्स जहाँ पे भी ध्यान दिया गया है? Hello? Vishwas, you're saying क्योंकि something? because I was not happy at all with the character development of three body problem also, if that can be called sci-fi. I'm not sure. Sci-fi है, right? High concept. Sci-fi. मतलब उसको I नहीं was बोलेंगे तो बहुत किसको बोलेंगे? If हाँ it's not मतलब sci-fi, then nothing is sci-fi. Yeah. correct. So I was like थ्री बॉडी में भी I was like कि I understand कि उनका कैनवस बहुत जबरदस्त बड़ा था और कुछ ज्यादा ही साल उनको वो करने थे, तो वो सारे कैरेक्टर्स ठीक ही लगे मुझे खास नहीं लगा, एंड दैट इज माय क्वेश्चन। कोई है ऐसी बुक जिसमें दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ? बहुत I सारी है, have बहुत some. सारी है। I will recommend one or two after. Yeah, after this Yeah. discussion. मेरे दिमाग में अभी मतलब अगर आप मर्डर बॉट डायरीज पढ़ो तो उसमें जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग किया है, या फिर बेकी चेम्बर्स के बुक्स पढ़ो, वेफेयर सीरीज कैरेक्टर बिल्डिंग जैसे किया है, किंडर्ड पढ़ो तो किंडर्ड में जो इट्स काइंड ऑफ अ साईफाई फैंटेसी मिक्स है थोड़ा, बट किंडर्ड में जो ओलिविया बटलर ने किया है कैरेक्टर बिल्डिंग, इट्स अ राइटिंग स्टाइल डेफिनेटली। Yeah. Like some writers are sacrifice, they wholesale sacrifice their characters for the world building, the mostly, और ये इसका तो mostly philosophically है इसको, he has a more than the sci-fi, I think he has a philosophy that he wants to, he has a question, he has an existential question in his mind that he wants to get to the answer to, and to get to that answer he's creating that world, so characters come very down the list for him, which I think correct. it's a choice, but it, for me it doesn't work for most of the stories. Because we my would favorite love are like if 5-6 stories. Yeah. we, Bolo. we would love if we could visualize that it is really happening to a real person rather than Yeah. figment of his मतलब अब ठीक है पता है वो स्टोरी ही लिख रहा है, बट it becomes more real कि अगर मतलब, but हाँ ठीक है anyways. एक क्वेश्चन पूछना था to the panel in general. Where do you think are the stories happening? Majority of the stories happening. If you have to pick just one city or country बोलते हैं, in one country in the world, and just say urban or rural, where do you think most of the stories are happening? Because the characters I'll देख say लो and Singapore. मैं Singapore नाम देख लो। for some reason. अच्छा, Yeah. Is Greg Egan a British person? they don't go on the author, just tell me Australian. from what In So spite एक of दो that मेरे stories को में I think जापान आ Gold Coast का reference था. So I said हाँ, that yeah, it yeah, is Australia. yeah, I Because also he is looked up where he Australian. was from, he is so I was Australian. Yeah, influenced by that. हाँ, yeah, he's from I there. read, Yeah. मेरे लिए तो I read about the author much later, तो मेरे लिए सब लोग milk toast white लोग थे from USA. So it Yeah, did yeah, not, yeah. So it was like there are good sci-fi, like the good sci-fi that is coming out now is indigenous. I like indigenous, ये गोरे लोगों का sci-fi ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, which is भारत. हाँ, Indian sci-fi, native Chinese, Native American रहेगा, West Indies का, African sci-fi, the sci-fi that comes from the culture itself, which does not shy away from the culture. It takes it along with Yeah. it, takes the community along, and makes science fiction, the broad spectrum science fiction, fantasy, speculative fiction जिसे बोलते हैं, it makes it complete for me. This lacked that cultural element मेरे लिए थोड़ा. But the concept, talking about the good parts, concept and delivery of that concept for some of the stories is so good. Like Safe Deposit Box is also one of my favorite stories, where this man
uska summary, a man Same. inhabits the body of a different person every time he wakes up and That has is my lived. favorite story. Yeah, Actually, the it's a person. good. Every in that there are some characters, there are some different characters because he had to write different characters, so they actually feel different that way. So it's, I really like that, but it's still one voice carried throughout the story. Yes, Also, Ash. in that story, there is kind of an arc also, in the sense Yeah. कि Yeah, yes. हाँ पूरा एक आर्क है कि वो Mhm. पहले बड़ा ही he is very indifferent, he doesn't know, and then suddenly one of his bodies kind of he's tries to figure out what's going on, then he can connect the dots. तो बहुत कुछ हो रहा है उस story में. Yeah, and another thing, yeah. Aishwarya, because you mentioned it, मेरे को अच्छा लगा कि you get that he's in a different body every day, right? मतलब metaphorically speaking, Yes, not the yes. other way. But yeah, but मैं वही सोच रहा था कि why are we focusing on this janitor? मतलब he could have chosen anything ना, कि किसी Yeah. भी body में हो सकता है वो. Why are we following this story? And then the reveal that might or might not be true, that happens. The character arc, Yeah. like Aishwarya said, that happens. It was very interesting. Okay, I was like, ah, okay, now it makes sense. सही है. Yeah, like he I said he had to go to those different, because the concept is so intriguing of waking up Yeah. and uh, I'm thinking from the writer's point of view, how he probably must have thought of the story. Like he thought कि ये concept है, a man wakes up in different body every time. So around the concept, he drew certain constraints, like in this area only, and there's no Yeah, reason yeah, for it. yes, It's a fantasy story as much as a science fiction, correct. because you don't know why it's happening. End में कुछ होता है, which I don't understand. किसको समझा क्या end में क्या होता है? कि he finds this body एंड as a में janitor. ही स्पेकुलेटिंग कि या एंड में वो खुद से ही डिसाइड कर लेता है. मतलब दैट्स व्हाई आई सेड इफ इट्स नॉट ट्रू और ट्रू वी डोंट नो, बट वो एक बंदे की स्टोरी सुनता है कि जिसके फादर न्यूरोलॉजिस्ट और व्हाटएवर थे, एंड he did some, hello, Yeah, some am I experiments. Yeah, audible? Yeah, Yes. बोलो. So yeah. he did some experiments, and वो अब उसका उसके दिमाग में वो कनेक्शन बना लेता है कि ही इज अराउंड, ही कुड बी अराउंड माय एज. सो Hmm. उसके लिए क्या होता है, उसका द स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस, आई थिंक, लेट मी जस्ट ब्रिंग अप द स्टोरी, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इज, आई ड्रीम अ सिंपल ड्रीम, आई ड्रीम दैट आई हैव अ नेम, वन नेम अनचेंजिंग, माइन अंटिल Yeah, डेथ. सो उसका पूरा लाइफ का गोल है कि भाई मेरे को एक आइडेंटिटी चाहिए yeah. व्हिच आई एम नॉट गेटिंग. एंड व्हेन ही उसका हियर्स दैट स्टोरी, motivation. सो That's ही why. मेक्स अप एन आइडेंटिटी. Yeah, Yeah, so that's why that's he why this makes up that character identity. is the strongest. If Yeah, you're looking for motivation, पहले ही बोल yeah, दिया उसने क्या exactly. है मेरा motivation हाँ first हाँ line हाँ. में. और मतलब we don't know कि it's true or not. मुझे ना पैरासाइट Yeah, की याद आई strangely when I was finishing the yeah, story, कि पैरासाइट में end में वो लेटर लेता है ना अपने फादर को कि I have a dream that I will get you out of this house. Spoiler alert for yeah, anyone. ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, but he writes that letter, but yeah, you know कि it might or might not happen. Most probably it won't happen. So in yeah, this case also it's the same कि he yeah. might not be the person जिसके body पे experiment हुआ and he's just a vegetable. मतलब it could easily be the Anand Bhai character from Munna Bhai MBBS, right? How could we know अरे यार, that वही है ये? But he, in आनंद his भाई बोल mind, he दिया. makes up a mind कि भाई हाँ कि yeah, like Chavi said, Yeah. Makato Your also name का took inspiration. inspiration from this for your name, yeah. बट वही One of मतलब my. एट द एंड वही है ना कि शुरू में एक ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया गया है कि ही वांट्स टू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ, एंड बाय द एंड समहाउ ही डज इट फॉर हिमसेल्फ कि भाई ये मेरी आइडेंटिटी हो सकती है, एंड दे Yeah, जस्ट एंडेड देयर बिकॉज they leave it open ended कि maybe he's the same character, maybe he'll just kill. But that also part killing से याद है, that also I like, जिसमें उसने mention किया है कि मैं खुद को मार भी नहीं सकता because if I मार भी नहीं सकता. kill myself, there's the another some random guy is going to die by suicide or something like that, and Yeah, there'll be no explanation for it. I'm going to be taking his life. yeah. Actually, Ted Chiang vibes. Yeah. Yes, Chang guys, exactly, yes. morality is such a strong statement on morality of you being someone else and you're responsible for that body and for that person's life, because you can, as I think Joker said, it just takes one day uh, for Yeah, you to become me or something.
If it is up to him, and if he was that kind of guy, he could fuck up everyone's life. But it's also his life that he is like, he sees every body as himself also. So तुम कहाँ line draw Yeah. करते हो of yourself and the other person? Such great questions raised उसमें, like this story left me thinking. Yeah, same. Ash, anything else to add on this story? No. Which one did you like in general in the story? Ash, I'm asking you. We'll just Yeah. go jump around the place. We won't follow Tessel linearly नहीं जाते. Sure. Which one do you want to talk about? Like, not your favorite, probably your favorite, but which story hit you the most? Yeah, I'm just looking. I I'll just think it share was my. the. Which Yeah, I'm one? looking through the stories. I'm just looking at the titles of the stories. Okay, so I really like the Safe Deposit Box and of course Blood Sisters. I like that. Blood Sister Ah, was good. Yeah. That was interesting. अच्छा था. That was an मतलब interesting concept. हम्म. कि I've not read a kidnapping. Learning to be me. Learning to Learning be to me be Blood is me my मैंने Sisters. favorite. पूरी नहीं पढ़ी है. Let's stay on Blood Sisters. What did you हाँ. like Blood about? Sisters Because was mainly that it did two not. sisters Yeah, two sisters who make an oath, and Chance. both of. Like I'll just read those. Two identical sisters are diagnosed with the same rare fatal disease. That's the Right. basic. Yeah, Blood Sisters. It did not hit. It did not do anything for me. Like I was like, Blood and Sisters. even Chimera, the Caress. It that also like क्या पढ़ लिया मैंने ऐसा. करेस मुझे याद ही नहीं है क्या था. करेस में क्या था? वो करेस मैंने Chimera होता है ना. दिवाली के दिन पढ़ा था. मैंने दिवाली के दिन पढ़ा और मैंने बोला क्यों पढ़ लिया मैंने ये दिवाली के दिन. हाँ, like I was दिमाग like, खराब हो गया. but सच में like I'm glad everyone agrees कि किसको अच्छा लगा तो याद बोल ही देना नहीं वो भी. करेस में था क्या? अच्छा है फिर. मतलब it's भूल गई हूँ. this body horror type है where this investigator goes into a house and he finds a chimera. Chimera is a cheetah with a woman's face. अच्छा that one. अरे हाँ वो तो हाँ. क्या चल रहा पता नहीं. Okay, sorry. I forgot about this story as well. The 100 light year diary. Yeah, that was good. That was That good. is a Yeah, good. that's I think that is better than Blood Sisters. That one Yeah. I've forgotten. That is a very My good. rating. That did. My top 3 rating for me right now is Learning to be Me will be my top spot. Second would be The 100 Light Year Diary, and third would be Infinite SS. Yeah. So far, जो 11 मैंने पढ़ी है उसमें. I'll just share my screen for a second. मैंने Yeah, एक थोड़ा 100 light diary गाइड टाइप वाला बनाया है. even I. 100 light diary दिख रहा है? thing that I liked Oh, wow. was yeah. Nice. Screen Yes, दिख रहा है? yes. Oh, nice. हाँ. So the bold ones Free are will the वाला. ones that Yeah. I liked. हाँ. तो फ्री विल का कंसेप्ट medical. कितना मेडिकल है, मैं थक गया. ये तो मैंने ये मॉरल बायोलॉजी छोड़ ही दिया. मैं बोला कि नहीं पढ़ा जाता मेरे से और मेडिकल. Okay, 100 light. Okay, this is good. ये इसमें blurb है ना तो याद आ रही है. हाँ, ब्लर्ब है तो So I इसके think ऐड नहीं 100 किया. light 100 diary. The Walk से- अच्छी है to क्या be मुझे me- पढ़ना? मुझे याद नहीं मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा. कौन यार सी? नहीं पढ़नी पढ़ा मैंने पड़ेगी. शायद. लास्ट नहीं पढ़ी है मैंने. The Walk. हाँ, द सुमित वॉक इज VAT गुड. द करके वॉक भी इज एक प्रीटी और है. सिंपल. द वैट अच्छा. इसमें नहीं है, पता है. पेपर बैक में है ही नहीं. अरे बहुत अच्छा है, निकाल लिया उसको. अच्छा है, बहुत अच्छा है. इतना इंस्टेड खराब ऑफ लगा द मुझे क्या वैट बताऊं वो इट्स story. द मोट है. ये सिनॉप्सिस नहीं है ना उसका. इसका तो दिखा दो सिनॉप्सिस देख के synopsis मैंने में. नहीं पढ़ा. दिख रहा है. Poem taken from अरे rape नहीं victim नहीं are नहीं found. बिल्कुल नहीं It's है. different, right? अच्छा. बिल्कुल नहीं है वो. I'll tell you, जो बुक पे मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था वो था सीइंग. क्या चल रहा था उस बुक में मुझे पता ही नहीं चला. Seeing अरे मुझे I याद liked करने दो it. एक मिनट. Seeing is the one where he Okay. hallucinates himself to be from. I मेरे like को the वो concept. I visualize did not like the लाइन थी. story. हाँ, हाँ. got it. हाँ जो प्रोड्यूसर होता है जिसको गोली मारता है कोई. The हाँ book हाँ हाँ. adaptation guy. हाँ, Yeah. okay. वो I like मेरे the को way that it was. उसका उसमें जो concept उसका था. yes. I think I liked it. my Yeah. views are similar कि concept I like but the story I felt कि आधे पे छोड़ दिया उन्होंने कि हाँ हो गया that's it. Well, बहुत random वे a lot of stories are like that, right? ऐसा
There is no specific end. ऐसा life Correct. life goes on वाला end है वहाँ पे. Yeah, but in some cases it works, like safe deposit box के case में it work, but Yeah. इसमें थोड़ा मुझे seeing में थोड़ा उल्टा लगा. I think इसका कुछ है डिग्री वगैरह है इसका मेडिकल बिकॉज कितने सारे हैं उसमें प्रोसीजर के अंडर प्रोसीजर में लाइक समवन goes to a procedure even with this appropriate love or in this there are gender man who tries to Yeah, but- conceive and man who tries to become a woman. This one Okay. appropriate love I में think ये इसमें 100 Closer light में। year डायरी करते हैं, वो फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही था, या बहुत सही पे था. बात Yes, yes. करते हैं. Yes. This I इसका like. ब्लॉग पढ़ लेता हूँ. After invention of a method for sending messages back in time, history of the future becomes common knowledge and every person knows their fate. So when you know their fate, when you know your fate, what do you do? Like basic question वही है. That's the Yeah, question correct. that is asked and he explored it in the form of story and I really liked that story. What did you guys think of reverse time? अच्छा Like लगा, the मतलब as a idea concept of भी it reverse was time. nice. Yeah, मुझे याद दिलाना yeah, क्या that था was वो? good. Like मुझे याद नहीं. like the story starts with the introduction, na, that this is how they get this. I mean, this is how they know their fate because their galaxies. There in is a a- star or there is a galaxy. Yeah, they're in a And- they're in reversed time. हाँ, अच्छा, हाँ. there's some very Okay. Tenet Yeah, vibes. yeah, yeah. Yeah. It was very hand wavy kind of stance था वो, like it's okay. But the He part that wanted I to liked justify was- it, right? Yeah, but the part Huh. that I liked is when he was introducing it and he's like, oh, this scientist got this. And the scientist is just like every physicist I've met, extremely annoying and so arrogant. He's like, no, you can't. You can't. You won't be able to. You can't. like, bye, मेरे को सोचने तो दे. So yes, इस book में I think एक तो what do you do, that is the question we grapple with, and the other thing is the irony of it all at towards the end, Yeah. right? Yeah, yeah. कि वो भेज तो सब, he knew what he was झूठ ही supposed to रहे. write. Yeah, exactly. Yeah. So was it Hmm. really free will? मतलब वो तो अपना कुछ कर रहा है Yeah. जो से करना है. Hmm. So और And Yeah. another thing they explored here कि मतलब there is some word limit ना, that you can send only this many amount of words or something like that because of data transmission or something. So उसमें एक part बताया कि he is going to meet his future wife और वो उसको कुछ kiss करती है या something like that. Yeah, And that's he how has it not starts. he has not written it in the diary. And when That you is- first read it, you think रे क्या अच्छा है, मतलब they are showing the girl to be impulsive and not everything is written in the Yes. diary. कि this could be your hidden Yeah. agenda. But later it's revealed that the entire world at larger scale in terms of geopolitics also are doing the same thing. कि वो Yeah. सब कुछ नहीं लिख रहे. They are just projecting a utopia that exists in the future that might or might not even exist. Exactly. In order to satisfy their goals in present, they are writing it from the future. The same people in the future are writing कि हम उनको ऐसे ऐसे लिख के देंगे. That's how the things will be turned in our direction. So the first part, the kiss wala part that is omitted, that was actually a preparation for what's about to come in the story. So वो And मुझे it's वो ramped flip मुझे up. बहुत अच्छा लगा. Ramped up Exactly. when his friend has an injury and he's badly beaten, but in the book, in the diary, he's written कि minor injury है ना, like Yeah, exactly. Yeah. Minor So as to- injury कुछ लगा ही नहीं है. Yes. so as to protect the kid from this inevitable like the loop, closing of the loop, even when he cheats on his spoiler, सबको spoiler. Exactly. So the thing that हाँ. really was not more than this character, ये तो realize कर रहा था, ठीक है ना? हाँ. ये तो realize इसने through the point in time he realized that डायरी में जो या तो चीजें लिखी नहीं है या तो जो लिखी है they could be false and they could be misleading, right? And but his wife already knew कि she's going to marry a deadbeat of a Yeah, husband. yeah. That Yeah. thing Correct. वो she and still yet chose she to- executed. And Yeah. she still chooses to do that. Yeah. Exactly. She does not But choose That to. was weird. Like, I don't think there's choice involved anywhere.
Like from her Yeah, perspective, yeah. it's like ये तो होने ही वाला है, ये तो even if I don't want to, like it's लिखा है सब कुछ. So I don't know. And she's सब out of लिखा it. हुआ है. सब And लिखा she हुआ है also guys. writes सब it लिखा somewhere. हुआ है. I always knew that I'm going to marry my husband is going to cheat on me and this and that. Yeah. And And in his version, it's written very goody kind of goody stuff, goody. right? No, then I'm thinking कि Yeah. है ना, then I'm thinking कि what if her version is also false? Why can't she go outside her version? Exactly. Yeah. Why did she not, take that? So does free will actually exist, or नहीं, or is it just a हर जगह fabricated? contradict कर रहा है. It's just fabrication of this world that the utopia that is supposed to happen. Even the geopolitics angle, they let that was a millions of nice people die inclusion. also, right? ये आपने इधर ही किया ना, मैं कश्मीर में आके करते हैं कुछ. हाँ, कश्मीर The कश्मीर Truman में Show, man. correct. Truman Show, one of my favorite pictures. Same. ट्रूमन शो का क्या? It's like निखिल ने chat में लिखा था. Yeah. It's the Truman Show. Yeah. The illusion of free will. Yeah. Yeah. Yes. Truman Show can be a really dark movie. Like if you want to If you really think about it. ये if you really दिलजीत क्या think कर about रहा है? क्या होता है, like Is he creating a you just kill yourself like ऐसा if you think your whole life is like that. It's fabricated, yeah. Then Yeah, but the most यही free will वाला concept इसमें भी तो लाए हैं ये लोग learning to be me में. Learning to be me में भी है. Yeah. हाँ थोड़ा बहुत तो है ही. गाइड कर देता हूँ. Yeah. I think निखिल कुछ कह रहे थे. क्या निखिल? दिलजीत ज्यादा कह रहे हैं. दिलजीत के अंदर अर्नब गोस्वामी आ गए. वो दैनिक अरे जागरण चाइना ही तो अटैक करता है कश्मीर पे, और कौन करता है स्टोरी में? नहीं करता है. I think चाइना वाले तो कर, अब बहुत टाइम हो चाइना गया. वाले but तो कर रहे ऐसा ही. बहुत टाइम हुआ. हम्म. निखिल भाई, you were saying something? नहीं, मैं तो वो ट्रूमन शो का जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसमें ही कह रहा था कि उसमें एक Free will. सीन था जिसमें वो उसको मतलब डज ही ब्लीड वो चेक करता है शायद, राइट? उसका Yeah. दोस्त जो रहता है, बाप, इट इज लाइक यू डोंट रियली you can't really just check someone ना कि तेरे में खून है कि नहीं. So then basically around you might be, everyone might be like that ना. So वो बहुत Yeah. अजीब हो जाता है. I mean if you go and think for real तो वो ऐसा लग सकता है कि सारे एम्प्लॉय ही तो है मेरे आसपास किसी कॉर्पोरेशन के. तो यार Like none of the choices you made were yours, and even if the choices were yours, they were heavily influenced, much like what our real life is right now, guys. It's heavily influenced. Correct. We are in the Truman Show. Also, Very it good. reminded me of the Americans series, Hmm, where yeah. the husband and wife are constantly making sure they are aware of what each one is up to. It's like वो एक दूसरे पे नजर रख रहे हैं at the same time. अगर कुछ fuck up हो भी रहा है तो नहीं दिखा रहे हैं. I Mhm. mean, some parts of it reminded me of that series as well. कौन सी series? Amazing show. The American. The Americans. Also, हाँ. remind me if मैं I'm बोलने वाली wrong. थी अमेजिंग रेस में तो भागते दौड़ते रहते हैं. ये क्या Yes. वो भी Yeah, फुटेज That है. was really हाँ. No, they also don't have any free will. वो भी ऐसे ही भाग रहे हैं. वो भी ऐसे ही बात. Yeah, मैं I थोड़ा have a ज्यादा story. confused हूँ. I was on one episode of Amazing Race. क्या? What? Let's save this for it. I want to hear this. चिन्मय कुछ बोल रहा था. Okay. हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इसमें the character that we follow, the guy, he's only reading up to that day ना, और जो लड़की है उसने पूरा Yeah. पढ़ा हुआ है उसका डायरी. ऐसा होता है ना. That's why she knows कि, and still she chooses to marry the guy. नहीं, he has read the full He has read story. Thing, na? Yeah, he knows, And but she what writes he has it. written is अच्छा. what he has written is he has a very happy life. He's describing the mundane मैं लिखा है मैं happiness. भगवान का मानस हूँ
तो हाँ वो मानता है सब कि वो झूठ। भगवान का बंदा हाँ है। yeah. हाँ Do you think she doesn't say anything because she also believes that if he reads the future version, he'll become that? Like if he reads that everything is good, everything is great, she can find, because there is, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा when they first met मैं उसे explain नहीं कर सकता because when did they first meet, when did they write, but in that sense कि like the reason she doesn't call it quits is because she has a faith that if there's a destiny, he might fulfill it, like prophecy, right? I think I would like to extend your point कि अभी मैं स्टोरी के एंड पार्ट पे हूँ एंड इस एग्जैक्ट डाउट मतलब ये मेरे भी दिमाग में आया था. He answered it in a paragraph. He has written कि sometimes I wonder how different my life would have been without their intervention, but the question is meaningless. It couldn't have been any other way. Everyone is manipulated. Everyone is a product of their time and vice versa. मतलब everyone is a product of their time and everyone's time is the product of how they are. ऐसे Yeah. करके. So that is I think how they try to justify it. कि it was always going to be this way. ऐसे करके. मतलब वही बेसिकली कि सब कुछ लिखा है. neglecting free will. हाँ, everything is planned. There is Guys, Final Destination. Ah, favorite film series. Death is your enemy. उस मूवी की वजह से अभी भी हाँ, जो yes. रीबार दिलजीत वाले भाई ट्रक आज के पीछे नहीं जा सकता मैं. मैं मेट्रो के अंदर दिलजीत- बैठ के करता हूँ. दिलजीत भाई आज हाँ, asked ये an सब कर interesting सकता हूँ. question guys कि हम लोगों के पास ये डायरी होती तो how would you write your life? कि आपके पास I ऐसे would limited never words है. want to Would know you the write the person I truth end up with. or I would never. मेरे को जानना ही नहीं कब मिलेगा. It fucks up so much. There या is मेरा a भी Ted सेम मतलब छोटा शॉर्ट स्टोरी है टेड चियांग का. एक्सेलेशंस में एक शॉर्ट स्टोरी है. आई डोंट रिमेंबर द नेम. इट्स अबाउट अ रिमोट. if anyone has read it. And in that remote, simple free will का पूरा concept तुमको ये सिर्फ एक ये समझा देगा. There is a remote which has a light and has a button, right? And every time you press that button, a microsecond before you press that button, the light lights up. Okay. So the button, okay. so the device knows when you're going to press the button. So just before you press that button, it's not कि it's monitoring any other. It's very simple. तुम बटन प्रेस करने जाओगे उसके पहले ही लाइट हो जाएगा. उसको पता है. There is no free will in that particular universe. It's so beautifully Oh, done. Same concept इसमें भी वही है. If I had the diary, I know I've tried to write on this concept, but it becomes a closed loop kind of a system. कि you end up with everything is planned, so you can't do anything. but तो like Chavi said, for example, एक example लेते हैं कि you won't want to know who you are ending up with, but you don't know कि सामने वाले ने क्या लिखा है. If the person you are ending up with उसने लिखा है अपने डायरी में कि अपनी शादी होगी, तो वो तो आके बोल देगा ना. So that also मतलब dynamics of how you interact with people also change according to who you are interacting with ऐसे करके. But interesting. आप में से कोई डायरी लिखता है वैसे in general, not just 100-year वाला? And how honest are you if you are writing the diary? I write it, but Yeah, that's a bit mostly wild. because I try to find डायरी में how I झूठ क्यों feel. लिखेंगे? How हाँ मैं भी बोलो कोई नहीं पढ़ने वाला वो. ये क्या It's हाँ, more हाँ. prophecy. और मेरे हैंडराइटिंग में लिखूंगा तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, तो इट्स पढ़ भी डबल नहीं पाएगा. सिक्योरिटी. True. मतलब जिनमें तुम डायरी में ऐसे लिखते हो ना कि मैं बहुत ही खराब इंसान हूँ, मैंने आज नहीं मैं मतलब what इतना fictional diary are you writing? No. मेरा But आलस इतना है कि मैंने कभी लिखा ही नहीं डायरी ऐश्वर्या. I didn't even try. But it's true actually. A lot of people project their versions on when they write Yeah, exactly. in the Yeah. diary. That's I'm not Us completely me honest because struggle that. there is always a little chance that it could be read. I don't want to be my worst horrible self It's come out. and sometimes हाँ, sometimes coming मतलब out ऐसा over there. होपफुली भी लिखते हैं ना लोग कि डायरी में कुछ ऐसा लिखेंगे. मेरे कुछ दोस्तों ने किया है क्योंकि ऐसा कि डायरी में कुछ ऐसा लिखेंगे एक्सपेक्टिंग दैट समवन रीड्स इट एक्सीडेंटली ऐसे करके ड्रॉप कर देंगे हाँ डायरी को. भाई हाँ. जो लिखा है वो पढ़ा जाओ. ये होता ड्रॉप रहता कर है. देंगे. That- ये क्या? 14 साल हिंदुस्तान के का प्लॉट बच्चे. लग रहा है. अच्छा, I'll discuss it later. अभी let's stick to the अच्छा. topic. I have a story related to this. ये अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है वाइब्स. छोटी वाली. Exactly. काफी होपफुल.
ठीक है, where were we? Excel sheet दिख रही है अभी भी? हाँ यस यस Okay. एग्जैक्टली So टेक्स्ट नोट में भी ड्रॉप हुई थी नाइस खाली खाली डायरी. खाली डायरी What do you guys title story buddy? Axiomatic. What did you guys think about that? हाँ इट वाज गुड आई लाइक इट Not one मुझे of my मतलब वो favorites. Totally so नहीं sorry बट to उसका मुझे I'm totally so sorry to interrupt this with absolutely shit comment, but I just observed something and I had to say. तो ये बुक सबको पता है? अरे अरे यार, वाह ये वाह ब्लर ही रहने दो, yes ब्लर ही yes अच्छी है, ब्लर मत best ब्लर मत ब्लर ही रहने निकालो. दो डर ठीक हटा है के ठीक हाँ, है दिखाना है। मत मत best मत ब्लर book मत ever. हटाना. हटाओ Please यार continue. तो पता है इसके किसी ने रिव्यू दिया है इस बुक में, ठीक है ना? रेजर टाइटल शार्प, है वो आईब्रोज रेजर शार्प है, बस उसके आईब्रोज अच्छे पार्लर में गई है. एग्जैक्टली, उसको कुछ वर्ड्स ही नहीं मिले इस बुक के, क्या रिव्यू लूं, तो उसने लिखा रेजर शार्प। 2 words. गुडरीड्स का बुक रेजर ऑफ द ईयर शार्प जीती है गाइस. डोंट रेजर शार्प जो डिसरिस्पेक्ट. अपने गले पे फिरा दो अगर आपने वो बुक पढ़ा है तो दैट्स इट दैट्स माय रिव्यू ऑफ येलो फेस चलो ऐसे वापस क्या आते हैं यार भारी भारी डील किया अच्छी यार. चीजों की बात करते हैं हाँ ना हाँ यार ना. Which is okay. मेरा वो Which was the worst? Which was the worst वो भी story? on the point. you which was the worst story of Yeah, this book yeah. the vat for me the vat इतना नो मेरा दैट आई दिमाग थिंक इतना एक तो खराब इतना था छोटा सा स्टोरी है ना कि पेपर बैक में बहुत ही है भी खराब नहीं था हो. यार वो Yeah. है ही नहीं, इसमें प्रिंट ही यार नहीं किया बहुत उन्होंने. खराब था यार वो मैंने जो ईपब भेजा उसमें है. Hmm. हम्म द वैट का स्टोरी क्या है पता है बेसिकली मैं मोटा मोटा बताऊं तो कि ऐसा एक आदमी है उसको एक लड़की मोटा मोटा पसंद बता है रहा है तो इज इट और कॉल्ड द फैट. हाँ सुन तो एक एक आदमी है उसको एक लड़की पसंद है that's वो उसके bad. घर में जाता है Did you notice Sumit only कंटेम्पलेट one कर person laughed? Did you? अरे यार उस बेचारे को बताने दो स्टोरी. Jokes take नहीं नहीं स्टोरी precedence बताने normally. लायक है ही नहीं मैं वही कह रहा हूँ मेरी स्टोरी 4 लाइन की है एक लड़का है उसको एक लड़की पसंद है वो जाएगा वो देखेगा उस लड़की को सोचेगा कि उसका मर्डर करूं क्या नहीं और एंड में डिसाइड करेगा मर्डर नहीं करना है एंड ऑफ स्टोरी दैट्स इट ये क्या दैट्स द रिवर्स होल क्राइम स्टोरी पेट्रोल. ये 5 सेंटेंस पढ़ लिया आपका हो गया स्टोरी इज डन कोई कंसेप्ट है उसमें बट डजंट मेक सेंस एनीमोर समटाइम्स मतलब मत पढ़ो यार इसको भी है ना, लाइक इज अ एज अ कॉम्पिटेंट क्राइम लिटरेरी पीछे फिक्शन राइटर, इतने से कंसेप्ट को है ना इतना सही बना देगा ना. क्राइम डिसीजन. नहीं मैंने कैसे पढ़ा है बताऊं क्या सुमित मैं आई वाज जस्ट ऑफिस में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था मेरे पास पीडीएफ भी था सो कितनी स्टोरीज हुई है देख रहा था द वैट वाज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल सो मेरा लंच ब्रेक हुआ था 10-15 मिनट थे मैं बोला पढ़ ही लेता हूँ और उसके बाद इतना मैंने काम किया है जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू फॉरगेट दैट स्टोरी कि भाई मैं बोला मैंने ये क्यों पढ़ा हर रोज जाके बात पढ़ना. या आई एक साल के बाद चिन्मय के बॉस बोलते हैं तू वैट पढ़ के काम किया या वैट वैट 59. आप लोगों को कौन सी मतलब नहीं पसंद लगी लाइक छवि वदास की यार मैं कैरेस तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं. उसके बाद तो कंटिन्यू करूँ या नहीं ऐसे ही लग रहा था मुझे. मैंने किया क्या ही ही नहीं पढ़ लिया ऐसा लगा. Same. Then it is like fuck this shit. मेरे यार को तो क्या था वो. स्लीप भी नहीं एक तो अच्छी लगी. बॉडी हॉरर टाइप कैरेस मुझे नहीं पसंद नहीं था. है. हाँ same. कैरेस नहीं था. It was a slap. इट वाज अ स्लैप ऐसा ऐसा करके चमट मारा. लाइक सम सीन्स आई लाइक वो जो हॉरर जो वो बेसमेंट में जाता है लाइक कैन ही एक्चुअली सीज द कैमरा फिर एंड व्हेन ही वेक्स अप एज मतलब उसका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दिया. बट द ओवरऑल story like to just satisfy this, and there might be actually billionaires who think this way. So basically the story is this man finds the camera is a cheetah leopard, one of those two, with लाइगर the with a woman's face sewn on it, and it's properly conscious, it talks and all, and then and it's created for the express purpose because a billionaire wants to recreate a old painting. असली painting है वो. if you just या look आई online गूगल्ड इट यार. आफ्टर नाम भी करेसी है उसका और पेंटिंग भी घटिया ही है मतलब.
नाइस। हाँ, तो उसका Did he his wanted to face look recreate like that. हाँ, I was like, I was interested to know because Vishwesh said that Blood Sisters was his lowest, and Ash really liked it. So I was wondering if what was. see, विश्वेश I इज also did नॉट not हियर आई like. थिंक। I did not like Blood Sisters. मुझे मुझे ठीक लगा यार, मुझे बुरा नहीं मुझे लगा तो ठीक ब्लड लगा, सिस्टर। हाँ सीरियसली। हाँ, बुरा नहीं लगा ब्लड मतलब। सिस्टर्स में मुझे आई जस्ट लाइक दैट कॉन्फ्लिक्ट जो वो था ना कि वो बहन को शी न्यू द अदर ट्विन वाज सफरिंग, तो बट ना शी वाज इन द थिंग कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, ये पता नहीं ठीक होंगी या नहीं होंगी, उसको बताऊं नहीं बताऊं, एंड बिफोर शी कुड बी डिसाइसिव अबाउट इट शी फिगर्स आउट दैट यू नो द सिस्टर हैड पास्ड अवे, तो Hmm. दैट ट्रोप वो वाज अ बिट एंड अनदर पार्ट मुझे सही लगा उसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ बैकड्रॉप कि वो बचपन में वो ओथ लेते हैं कि राइट। क्या जिएंगे तो साथ मरेंगे, व्हाटएवर द ओथ अरे मे मेरे को बी लगा आई हैव कुछ टोल्ड। आएगा ऐसा, ये वाला एलिमेंट, थोड़ा फैंटेसी नहीं एलिमेंट बट आ रहा है थोड़ा. उसका नहीं नहीं कुछ बट नहीं था ना, साइन ऑफ आई। उसका मुझे एक्सट्रापोलेशन सही क्या लगा पता है क्या, कि जो ठीक है ना सिस्टर, उसको लग रहा था कि मैं ठीक हूँ तो मेरे जेनेटिक्स ही उसमें एग्जैक्टली है, सेम ही दवाई है, हम्म, तो दोनों सेम ठीक दवाई है. रहेंगे। हाँ और उस वाली को लग रहा था हाँ कि मैं मर रहा हूँ तो वो भी मर ही रही है, हाँ सो वो हाँ एग्जैक्टली उसका हाँ हाँ प्रोटेक्ट हाँ, कर। अच्छा अच्छा, दैट. तो ये पार्ट हाँ, मुझे बहुत सही लगा, दैट दैट कंसेप्ट पार्ट इज मुझे गुड, बहुत या. सही लगा। तो उसको दोनों को ऐसा लग रहा है, दोनों ये दोनों अगेन neither of them या reached या out। या और अगेन एंड में अगेन क्या ये था मुझे स्टोरी एंड में पढ़ते भूल हुए गई। आई थिंक वन ऑफ देम डाइज। आई थिंक वही होता है ना कि हाँ, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स होता है, कुछ लोगों पे सम, कुछ लोगों पे अदर, और नहीं जो नहीं नहीं, अदर्स होते देन हैं शी वो डज असली समथिंग ना। नहीं, she gets the experimental drugs and her sister gets the placebo, so she नहीं dies. दैट आई प्लेटिबो। नो, के आफ्टर दैट बाद व्हाट बोल रहे हैपेंस क्या? शी, हाँ उसके बाद शी गोज एंड डज समथिंग राइट, शी स्टॉप्स व्हाट शी वाज डूइंग, शी गोज एंड शी फिगर्स आउट अबाउट द ट्रिपल ब्लाइंड ड्रग टेस्ट, क्या था वो मुझे कुछ याद याद नहीं नहीं आ मुझे. रहा एंड का, वो मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन का कॉन्फ्लिक्ट याद है। हम्म। अगेन अगेन कमिंग बैक टू द concept की axiomatic, कि दे बोथ थॉट कि ये होना ही है, दिस इज हाँ एन करेक्ट। एक्सियम, कि मैं बच या रहा हूँ तो वो भी बच रही है, और मैं मर रही हूँ तो वो भी मर रही है। सो मैं उस डायरेक्शन में भी सोच रहा था व्हेन आई वाज रीडिंग दिस कि दे बोथ थॉट दैट द thing that is happening to them is also happening to their counterpart, and that's why ironically they didn't get in touch with each other and one of them died. ये डुअलिटी वाला इज आल्सो इन क्लोजर, अगर पढ़ा है किसी ने, यहाँ तक है. क्लोजर नहीं पढ़ा यार, क्लोजर तक नहीं, क्लोजर आई थिंक क्लोजर मेरा इज इन द सेम यूनिवर्स एज लर्निंग टू बहुत बी आगे मी. यार, सेकंड लास्ट। ओह ओके। हाँ, वो जोल वाला कंसेप्ट इसमें भी है, बट इट्स, हाँ, लर्निंग टू इट्स बी एन मी ओके वाज स्टोरी. लाइक रियली गुड यार। लर्निंग टू बी या मी आई लाइक कुड बी अ दैट. ब्लैक मिरर एपिसोड। मैं पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक मिरर में प्रॉपरली बना सकते हैं ऐसा, या बनाया भी होगा उन्होंने कुछ, मे बी। फ्री विल इम्प्लांट वाला ये है ना, एंड अच्छा हाँ बहुत जगह इसने उसके बाद सॉरी इमोर्टेलिटी भी. मैं इसमें चली गई, उसके बाद वो हैक करने लगती है ना उसको। क्या ब्लड सिस्टर्स पे ही हो? हाँ ब्लड सिस्टर्स में हूँ, उसके बाद वो हैक करती है उनके सिस्टम को। हाँ कुछ कुछ ऐसा अच्छा अच्छा, करती है आई थिंक। वो ओशंस हैक इलेवन टाइप करती का. है जितने भी ट्रिपल ब्लाइंड हैं उसके, वो मॉडिफाई कर देती है उस प्रोग्राम को कि हाँ कि वो आ, बच जाए ऐसा करके, हाँ हाँ सबको वही डोज मिले। डोज मिले, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। हाँ, ठीक है. राइट, वही मेरा दिमाग विजिलेंटी अटक गया था, जस्टिस. तो हुआ था। मैंने ब्लड सिस्टर्स पढ़ी तो नहीं, पर द वे यू गाइस आर डिस्क्राइबिंग इट मुझे पता नहीं क्यों धूम 3 का प्लॉट याद आ गया। अरे 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 the better visualization, yes. अरे नाइस। वाह। धूम 3 क्या घटिया मूवी थी यार. इस एंड हाँ. धूम इसमें 3 भी क्या वो थी? बंदे हैं हम अच्छा उसके नहीं मैंने गाते देखी हैं, नहीं है धूम 3। हाँ ओथ लेते हैं ना, तुमने बोला ओथ लेते बंदे हैं हैं हम और फिर उसके, बोला हम पे वन किसका इज जोर। वीकर। हाँ, एंड वन इज वीकर देन द अदर, Oh इट no. फिट्स हाँ, इट नहीं फिट्स। मेरा धूम धूम 2 में सब खत्म हो गया था ऋतिक रोशन के साथ साथ। वाह। अरे धूम 2, ये उस पे नहीं जाते, बट धूम 2 इज वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड मूवीज. एग्जैक्टली Same. सेम क्या सेम, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है। उसमें By ऋतिक रोशन। Aishwarya in वो different. डिस्पाइट डिस्पाइट द एलिजाबेथ वाला गेटअप, आई स्टिल लाइक इट।
Because of the Elizabeth हो गया Despite था the फिर fact despite that क्या है उसमें Aishwarya Rai sounds so annoying in that movie. अरे कौन? Who? Suneri. Oh, Suneri. Suneri. Okay, Suneri. I know. Like बोलती रहती. I बढ़िया love it. you're like Yeah. it's We like should और never. उसका हमारे शोल्डर भी ऐसा like Suneri. या Like basketball. What is the obsession with Bollywood and Bollywood's obsession with basketball? और खेलते भी नहीं ठीक से यार. Exactly. What is Hrithik Roshan's obsession with basketball? Kasoli Tigers Basketball. team. Yeah. Aishwarya, यार please apologize for किडनैपिंग भी Suneri. सही लगी थी यार मुझे. किडनैपिंग पढ़ी है आप लोगों ने? अरे kidnapping is really good. पुराने Yeah, I like that. really उसका good, yeah. अच्छी थी वो भी. ये भी ऐड करता हूँ. This is Kidnapping that, उसका मुझे that concept crime show also. The one where they put them. It feels like that. Like the one where they put upload. Upload is the name. Is it like that? Upload is like I saw Upload the movie which I really like, which is a better version of Venom. No, yeah, that yeah. show. People upload themselves into computers to live forever. अच्छा ये Yeah, तो that learning I don't think की this बात is कर रहे हैं. PEBC kind of explores that, but नहीं kidnapping थोड़ा अलग है. same similar concept, but kidnapping में it starts with this guy who gets a video message of saying that Yes. his wife has been kidnapped, and then they show a video of his wife talking. और फिर वो घर पे कॉल करता है and he asks कि है ना कैसे ठीक हो वगैरह. And I really liked इसका जो concept लेके इसने जो expand किया है इसमें. I'll just tell the whole story. Yeah, बहुत सही. Yeah, बहुत please. सही है. So he calls home and his wife picks up and saying कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो घर पे हूँ. And then he's like, ये कहाँ से मिला इनको image? And in that world, you can upload your entire consciousness, they scan you head to toe, they scan you at the gene level, at the DNA level, and upload you so that you can live forever. There are few stories which deal with the concept of immortality. तो इसमें भी वही है कि the obsession with living forever of that we have as human beings. So it's taken to that extreme where you upload everything about you, not just your data, but what makes you human into, and all of your thoughts and everything into this system. And what happens is it's a stupid reason because it did not change his password. Some hackers get into it. While he's discovering that he has been hacked, he gets another message from the kidnapper saying, with the wife now crying and everything, and he again calls home and saying कि my wife तो ठीक है, घर पे जाके he talks to her and she's fine. But and his wife is one of those who has not uploaded her memories, her anything. She feels like I'm okay with my death. I'm fine here. So what happens later, and what he discovers is when the kidnappers hacked into his memory, they recreated his wife as he sees her from his memories. Nice. So in the system, she is a living entity in the system, and in that system, she is trapped. She is actually kidnapped. Crazy. So he pays the ransom because immortality, the concept of immortality is a kind of paradise, a kind of a circuit board where people will get uploaded after they die. And he pays them on the promise that, will you upload my wife after I die? Because I can be with her. Yeah. That's the show because she also, doesn't. पता है? I think San Junipero करके एक एपिसोड है ना ब्लैक मिरर का, उसमें I think they do that ना. You have a opportunity to pass on. उसमें भी होता है कि that girls You've already passed वो on, लड़कियों right? से उसमें. yeah. You start off नहीं, as नहीं, the young ones. नहीं, they are just taking the trials, मतलब कुछ दिन जाके आते हैं and you also have an opportunity to do it forever ऐसे करके, and that lady is not doing it because her son didn't get the opportunity to do it, ऐसा था उसमें, and eventually वो convince करती है उसको दूसरी. Upload themselves.
हाँ बट इसमें अच्छा इसमें मुझे किडनैपिंग में अच्छा क्या लगा पता है क्या, कि उसके और उसके वाइफ के बीच में वो डिबेट होता है कि इफ मतलब वो क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इवन इफ मतलब ही इज एन अपलोडेड वर्जन ऑन द सर्वर, हर फीलिंग स्टिल मैटर एज अ पर्सन। और उसकी जो वाइफ होती है उसका आई थिंक कॉन्ट्ररी व्यू होता है कि हाउ डज इट मैटर, ही इज नॉट इवन अ रियल पर्सन, शी ऐसा इज नॉट अ करके। रियल पर्सन। हाँ हाँ मतलब तो वो वाला पार्ट था ना, वो मुझे बहुत सही लगा, जो डिबेट था and in कि his द फीलिंग मैटर इफ दे आर जस्ट मेमोरी ऑफ योरसेल्फ एंड yeah, नॉट फिजिकल, सोल नहीं है and in उसमें his बेसिकली, mind बस प्रोग्रामिंग लाइन and है, from ऐसा her करके। point of view she is also right that if I am not the one या thinking and talking, is it really me? And from his point of view, it's also correct because what I see of you, solipsism जो बोलते हैं, what I see is the world, the selfish view. I think that's what it is. Uh, if what I see of people is what is in my head, right? If those are the ones that I want to interact with, and if I close my eyes and close my mind shuts off, the people don't exist for me anymore. So what is actually real करेक्ट। for me? The man is also correct. So I really like that for kidnapping in that way. हम्म। या किडनैपिंग वाज गुड वन, So बढ़िया if था। given a एंड choice, would सिमिलर you कंसेप्ट upload दे। your आपने हाँ और दैट्स अ कॉमेडी गुड है क्या? क्वेश्चन। कॉमेडी लिखा है, साइंस फिक्शन कॉमेडी। amazon प्राइम का शो है ना, आई थिंक amazon का ग्रेग शो है वो। डैनियल्स, ग्रेग डैनियल्स का हाँ है, हाँ अनदर ग्रेग, ग्रेग डैनियल से तो कॉमेडी ही नहीं होना। अच्छा ऑफिस का। अच्छा yeah शो है। इट्स अ कॉमेडी, अच्छा शो है सुमित, देखना चाहिए हाँ तुमको। अच्छा यप यप, ओके। गुड वन। हाँ बट ऐश्वर्या's क्वेश्चन, would you upload thank you yourself if given a choice? have you thought about it? Chalo, forget it. यस, व्हाइल आई वाज वाचिंग द शो, नहीं, बट मुझे लगता है ये एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि फ्रिज खरीदेगा क्या, वैसा ना। हाँ, बट या वैसा या अगेन उसका अगेन खरीदूंगा। दिस सेम कंसेप्ट। हाँ ये सेम कंसेप्ट ना थोड़ा एक्सट्रापोलेट करके उन्होंने लर्निंग टू बी मी में भी एक्सप्लोर Yeah, किया है, yep, yep. कि उसमें एवरीवन इज गेटिंग अ जूल एंड एवरीवन इज लाइक चलो कि बात करते हैं 30 लर्निंग टू 32 बी साल तक जस्ट। तो हाँ, रिप्लेस कर ही लर्निंग देते। में बात करते हैं, हर यस जगह तो प्लीज नहीं हाँ आ प्लीज रहे प्लीज। होंगे। या चिन्मय बता क्या होता है लर्निंग टू बी? सो लर्निंग टू बी मी में बेसिकली कंसेप्ट ऐसा है कि आप जब पैदा होते हैं तो आपके ब्रेन में एक प्रोब इंसर्ट किया जाएगा जिसका नाम रखते हैं वो द जूल। ठीक है, तो जूल क्या करेगा, आप जो भी एक्शन करते हो उसके कॉन्सिक्वेंस में आपका कोई भी न्यूरल रिस्पॉन्स होता है, कि आपको चोट लगी तो आप रो रहे फॉर एग्जाम्पल, या केक खाने के बाद आप खुश हो तो आपके दिल में खुशी महसूस हो रही है, या किसी को देख कर जेलस हो रहे हो, तो वो पूरा का पूरा मिमिक करेगा आपका पूरा बिहेवियर, जैसे ही न्यूरल पैटर्न्स आपके दिमाग में तैयार हो रहे हैं इट इज गोइंग टू कॉपी दैट। एंड इट हैज अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कॉल्ड द मदर, आई थिंक द मदर ही बोलते हैं उसको, जो उसको चेक करता है कि टीचर टीचर। डेविएशन नहीं होना चाहिए। वो टीचर। द टीचर, सॉरी द टीचर। सो टीचर का काम ये है कि वो डेविएट नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, व्हाट द एक्चुअल थॉट इज एंड व्हाट द जूल इज प्रोजेक्टिंग इट टू बी। और वो जूल आपके साथ बचपन से होने के कारण इट्स एक्चुअली लाइक योर ब्रेन इटसेल्फ, कि आपका ब्रेन क्या डिसीजन लेगा या आपके ब्रेन में क्या फंक्शनैलिटीज होंगी व्हेन अ सर्टेन सिनेरियो अराइजेस, दैट एग्जैक्टली इज मिमिक्ड बाय द जूल। और उसका होल कंसेप्ट फॉर इट इज कि इवेंचुअली आपकी बॉडी का ब्रेन जब मतलब ब्रेन एज हो जाएगा अलोंग विथ योर बॉडी, तो आपके न्यूरॉन्स विल स्टॉप फंक्शनिंग एट देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। सो जब आप एक एज के हो जाओगे तो उसके बाद यू विल रिमूव योर ब्रेन, यू विल डू एन ऑपरेशन जिसमें आपका रोबोट से ब्रेन की जगह पे ट्यूब्स एंड ऑल एंड इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होगा, और उसके अंदर आपका जूल जाएगा। आपकी पूरी बॉडी वैसे ही रहेगी बट आपके अंदर एक जूल है जो आपके ब्रेन का काम करेगा, एंड सिंस इट्स कंप्लीटली ट्रेन टू बी यू एंड इट्स लर्निंग टू बी यू, हेंस द टाइटल लर्निंग टू बी मी, so it will mimic the functionality of your brain so that your brain and your consciousness will live forever. So again the concept of immortality is done here, but the flip on this here is कि जो अपना लीड जो कैरेक्टर है, हाँ जो द था वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी, ट्विस्ट, बहुत सही ट्विस्ट हाँ था। या सो ही इज वेरी अप्रेहेंसिव अबाउट इट कि भाई मेरा ब्रेन नहीं है तो हाउ कैन इट बी मी, ऐसा हाँ, होता है। एवरीवन बट एवरीवन हैज अगेन स्विच्ड 25 years में कर देते हैं स्विच, कर लाइक देते हैं, या उसके ब्रिंग द मम्मी जूल। पापा उसको आके हाँ बताते हैं, एक वो 15 साल का होता है तो उसके मम्मी पापा आके उसको बता देते हैं कि वी आर नॉट और सेल्फ, और वो भी ऐसे बताते हैं उसको कि 1 साल तक वो नहीं बताते उसको कि हमने स्विच कर दिया है,
और वो उसको 1 साल बाद बताते हैं कि या वी नो व्हाट वी डिड द स्विच लास्ट ईयर, और उसको पूछते हैं कि डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन आवर ओल्ड ब्रेन वाला सेल्फ एंड आवर करंट सेल्फ, एंड इज लाइक नहीं नहीं, सो इज लाइक शी इज लाइक कि दैट्स व्हाई हम अगर तुमको डायरेक्टली बता देते तो तुम उस नजर से हमें देखते कि वी आर जस्ट जूल्स, दैट्स व्हाई वी वेटेड फॉर अनदर 1 year, एंड सिंस इट्स completely fine and it's completely working right now, so I think it worked, ऐसे करके। सो वो भी उसके दिमाग में होता है। एंड उसके रोमांटिक पार्टनर्स का भी वही होता है कि वो भी पार्ट मुझे सही लगा था बहुत, कि वो बिफोर द फ्लिप कि उसके साथ वो पार्टनर होती है, उसके साथ वो स्विच करने को रेडी होता है ऑलमोस्ट, मतलब खुद के दिमाग में रेडी नहीं होता बट ही इज ऑल्सो नॉट रेडी, एंड वो दोनों बोलते हैं हम साथ में जाके स्विच करेंगे और ऑपरेशन और करके विल डू इट। ये भाग और जाता है घर वो बेल्स आउट ऑनर कि भाई मेरे को नहीं करना है। बट में। अगेन ये मुझे याद इसलिए है क्योंकि निखिल भाई जो कह रहे थे ना फ्रिज वाला थिंग कि सबके पास ही है, तो दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हियर कि मोर देन थिंकिंग कि ये सही है नहीं है, उसका जस्टिफिकेशन बहुत लोग ये देते हैं कि सभी तो कर रहे सब हैं, कर रहे मतलब हैं। हाँ, तो क्यों एक्चुअली नहीं करना है, एंड ही इज लाइक इट्स कि नहीं नॉट नहीं आउट ऑफ द मैंने ऐसा ऑर्डिनरी ऐसा करना या It is almost फॉर a देम। norm. इट इज ऑलमोस्ट अ वेरी नॉर्म, मच अ करेक्ट नॉर्म कि करेक्ट। सब लोग कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं। हाँ मेरे मम्मी पापा ने कर रखा है, हाँ, लाइक मेरे दैट्स द सारे दोस्तों ने लाइक कर रखा है, इसमें फैमिली में सब कर रखा है। ब्लैक मिरर में या होता है ना एक वो कुछ कराते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरी, क्या रहता है, मेमोरी हटवा देते हैं या समथिंग लाइक, एपिसोड था ना व्हाइट वो भी क्रिसमस वो में भी दिखाया था वो कि व्हाइट क्रिसमस छोटा में मिनिएचर वर्जन बना वो के ये वाला का जहाँ पे दिस कुकी दिस बोलते हैं वुमन शायद, रन्स। आई ये थिंक। सेकंड ऐश्वर्या कौन है? ऐश्वर्या फ्रॉम लैपटॉप अच्छा, में भी। दूसरी ऐश्वर्या आई। मैं ही वो हूँ। जीमेल जैसे ही पूछा था मैं, दूसरे डिवाइस से क्यों आए ऐसे वाला। जीमेल पगला जाता है दूसरे इसका डिवाइस से होता आई थिंक इफ इफ एनीवन हैजंट रेड दिस तो इसका ट्विस्ट नहीं रिवील किया ना अब तक चिन्मय। नहीं 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 नहीं, ट्विस्ट नहीं बोला हाँ मैंने। तो ये पढ़ लो। मैं एक साइट है जो पता नहीं किसने किसने वो डाल के रखी है वेबसाइट पे, तो वो पढ़ लो। हाँ, वाहियात ही साइट है। यूआई जरा टट्टी है, यूआई जरा अभी आ टट्टी रहा है पर स्टोरी अच्छी है तो यू कैन यूज इट। ठीक है, मैं जानता हूँ। एनी अदर स्टोरीज? वॉक सिंपल स्टोरी है। इट्स नॉट हाई कंसेप्ट एट ऑल, इट्स barely science fiction, या but simple story. I like it. I actually like the writing in that one. यस ओके, एग्जैक्टली, द वॉक स्टोर, में द सुपरमार्केट वाला सीन ना सुमित, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द ट्विस्ट नहीं, एक्चुअली कम्स, जंगल में जाता है ना। वो पार्ट मुझे बहुत सही लगा। नहीं, वॉक इज वेयर ही गोज जंगल में जाता, नहीं नहीं लाइक वॉक इट्स। का नहीं, मैं आई एम स्टिल एट लर्निंग टू बी मी कि द अच्छा अच्छा। ट्विस्ट वाला पार्ट वेयर ही चूजिंग बिटवीन फ्रूट्स ऐसा करके एक पार्ट है, दैट पार्ट दैट्स का व्हिच राइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सही आफ्टर था वो, द बहुत ही सही। आफ्टर द ट्विस्ट जो लिखा है उस हम्म, भाई ने, बहुत सही लिखा है। या या दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉक। लर्निंग टू बी में के बारे में और किसी को बात करना है कुछ? लर्निंग टू बी मी यार, वो सब लोग पढ़ने के बाद एक बार ऐसे ही टपरी में डिस्कस करेंगे, वो स्पॉइलर हाँ के हाँ। बाद और मजा आएगा वो डिस्कस करने में, वी जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर नहीं यू पढ़ी है गाइस। लर्निंग टू बी मी। और कौन आई कौन थिंक जा बहुत रहा है? लोग, मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, वो पढ़ अरे पढ़ लेना लो यार। नंदिनी, यू लाइक इट। ठीक है। ये जो मार्क किया है ना मैंने, ये पढ़ना, बाकी नहीं पढ़े तो भी चलेंगे। मैं तो मेडिकल वाला एक भी मार्क नहीं किया, मैं इतना बोर हो गया मेरे को मेडिकल मेडिकल पर। ये अरे वो बोर्ड ही वाले तो जो भी है। काफी अजीब था यार वो हाँ बच्चा वो, पैदा भी नहीं होता और उसको आके बता देता है अरे इसका तो वो मुझे बहुत सारे बहुत ये आई weird लगा थिंक था। अप्रोप्रिएट लव में भी इसका कंसेप्ट देखो क्या है। उसका पति इंजर्ड होता है, सिवियरली इंजर्ड, सो शी कैरीज हिज ब्रेन in her stomach, like in a amniotic fluid, like it's a baby. एम्ब्रियो। हाँ, एंड अंटिल द पॉइंट 2 साल तक रखती है वो पेट में। 2 साल तक सबको वो पेट उसका बड़ा ही रहता है, एंड इट्स मोस्ट ऑफ स्टोरीज में ऐसा ही है कि सब लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं वैसा वाला। हम्म, और एंड उसमें भी एक एक्सप्लोर किया है कि does she feel motherly towards that thing that's growing, that is there in her body? It's not growing, it's just
stabilizing. They've kept it alive in a body, और फिर जाके वो क्लोन में डालते हैं. Very made story. नहीं पढ़े तो भी चलता. Closer, I think, Chinmay, just for completion, learning to be Mika, it's sort of in that same universe. Joel का universe है. तो चलिए तो वो पढ़ूंगा पढ़ फिर। लेना. हाँ, ये मॉरल वायरोलॉजिस्ट भी, इट्स मेडिकल. इसमें भी अच्छा, प्रोसीजर होते रहता है. द वॉक का क्या है? मैंने पढ़ा नहीं है द वॉक. हाँ, एनीबॉडी एल्स? वॉक का, आई जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ because I really like the writing and you can actually give it as prompt की इधर से start करो लिखना. Like this is your setup. The walk का starting है. Leaves and twigs crunch underfoot with every step. No gentle rustling, but the sharp snapping sounds of irrevocable, unrepeatable damage. As if to hammer into my brain the fact that no one else has come this way for some time. Every footfall proclaims that there will be no help, no interruptions, no distractions. ये वाह. start होता है and go wherever your mind takes you from this, as a night writing exercise. I really like it. उसमें जनरल स्टोरी है कि this elderly man is taking this other guy जो first person में जो बात कर रहा है through this jungle to kill him. The elderly man has a gun and this guy is walking like this through the jungle to a particular area. And उसका भी I really like the end. तो वो छोटा स्टोरी है ये. It's not एवरी स्टोरी उसने आई थिंक काउंट करके ही मैं 20 पेजेस ही लिखूंगा. सब स्टोरीज मेरे को 20 पेजेस ही लिखना है. 18 पेजेस Except the VAT is like 7 pages. वो तो तेरे लिए लिखा है उसने. बाकी वो भी बहुत ज्यादा हो गया. वैट मैं मेरे ईपब में पढ़ रहा था. मैं लाइक अरे मत पढ़ यार, बहुत हाँ, खराब. इट्स लाइक उधर मैंने वो It's फिर मैंने like मोड भी yellow नहीं face of पढ़ा this वो. book. अरे रे. हाँ, it's nothing until it's alive. Which one are you talking about, Chavi? जो आई थिंक द वूम वाला बात उसके टाइम का बोल रहे हो. हाँ, क्योंकि बहुत वूम वाला है इसमें. हम्म. यूजिन भी है. अप्रोप्रिएट लव ही रहेगा फिर. हाँ, इट्स नॉट appropriate love ही कह रही हूँ. हाँ. और कुछ. But he's extremely obsessed with the idea of identity, right? Yeah, very. Oh, yeah. Yeah. Like what actually means what it means to be a human. That identity. अरे एक्सियोमेटिक करते हैं ना डिस्कस द मेन स्टोरी, द टाइटल, और वो हमने किया नहीं ना आई थिंक हाँ, डिस्कस. वो he wants to kill his wife's killer, right? That one, right? हाँ, करेक्ट. और उसका पूरा लाइफ का आइडियोलॉजी थी टेकिंग लाइफ इज नॉट राइट. सो वो ड्रग लेके खुद को कन्विंस करता है कि नो लाइफ मैटर्स, ऐसे करके changes his कि axiom एवरी basically. लाइफ इज इनकॉन्सिक्वेंस. हाँ, या सही लगा था मुझे वो. मतलब मुझे ये सही लगा कि वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं मिल सकता बंदूक का या ऐसा लाइसेंस के लिए करने वाले स्टेटमेंट डालने का. सो वो ऐसे 2+2 करके वो करता है. वो मुझे जरा अच्छा लगा वो पार्ट. बट वही फिर मतलब एंड तक थोड़ा बेसिक होता गया स्टोरी, बट स्टिल नॉट अ बैड वन. ये फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग मेमेंटो टाइप प्लॉट है क्या? नहीं, लेस कॉम्प्लिकेटेड देन मेमेंटो, वे लेस कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा. The concept of the world is like if you don't believe in something, if you want to believe in something just for particular time period, you can take a particular drug ही है ना वो, या फिर कुछ. हाँ. You can take that drug and believe in that concept for that point. ड्रग्स के कैटेगरी को ही वो एक्सियोमेटिक ड्रग्स बोलते हैं. हाँ, वो mods है इतने ना वो. टाइम के लिए वर्क करते हैं. अरे हाँ, that is a good one. Yeah. या Sounds interesting. Yeah. Ash कौन से बहुत ही एरिया से बात कर रही है. नंदिनी, इट्स लाइक मतलब गजनी एक एंड पे है, मेमेंटो दूसरे एंड पे, बीच में एक्सियोमेटिक है. इफ यू आर टेकिंग दैट पैरेलल. There's no ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ये. बस ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो, like ऐसा ऊपर जाएगा वो.
हाँ बिछड़ ही एग्जैक्टली जाएगा। ऊपर से देख रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा पिरामिड क्या? ये सुनाई दे रहा है, लेकिन यू वेंट हाँ अवे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से बात कर रहे हो। नहीं, मेरे माइक तो गले में ही है, आने से। So yeah, 10:30, like we went 1.5 hours. That's विशेष about आया ही it. नहीं क्या वापस? नहीं नहीं आया शायद। शायद। ये मेरा कीकी बोबा ये about the whole thing, which I thought were कीकी। ये मेडिकल वाले तो यार मैं तो वो कीकी हम्म। बोबा की वजह से कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैंने उसको कीकी बोला था, सब लोग बोबा बोबा बोल रहे हैं उसको। अरे वो होता है कब का एक बार मैं देखूंगा ये कंसेप्ट। वो Hey, तेरा it's ये very चेंज मत simple. कर। हाँ, No, it just हाँ मैं basically तो means नहीं how you visualize sounds, huh? That's all there is to Yeah, it. yeah. sound and how you see sound, and also the if you see the word also, right, ki has a sharp, Yeah. bouba, it's हाँ यस rounded that way, Yeah. so that may Yeah. also influence Yes, you. I feel for numbers, like I don't like number 82. Like just doesn't. That is very specific. I know. 82. Actually, Asmi keep doing the psychology ये tests on me. Okay. Chinmay, Like, I'm अरे typing सभी some इसमें क्या numbers feel यहाँ होता पे। है? पता ये पता है तेरे को ये जोक? अरे बिल्कुल, कैसे नहीं पता होगा मेरे को। ये क्या है? शेवंती यतिका नाय नाहीतर 82 नाही, नाही, शेवंती 82 89 नाहीतर नाही, यतिका नाय नाहीतर नाही। 89 99 होना चाहिए, लास्ट वन इज 99। आई एम ग्लैड इट्स हेलो रिकॉर्डेड, पर भी रिकॉर्ड हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। वैसा बचपन में जो But ट्रिप what मारते does थे it जोक पे। mean? अरे इट्स अरे बचपन अरे में कुछ मराठी है। मराठी है, इट्स हाँ लाइक ठीक है मराठी एक्सेंट में थैंक्स अगर ये नंदिनी पढ़ोगे तो अब मैं और नहीं सोचूंगा मराठी एक्सेंट में इफ यू रीड इट, इट्स लाइक शेवंती करके लड़की है, 82 मींस आर यू कमिंग, 89 आर यू कमिंग, यू नॉट हाँ कमिंग, नाहीतर नाही, नहीं तो नहीं, इट्स लाइक दैट्स 99, so 70 इट्स लाइक 82 दैट, ओह इट्स अ फोर फोर स्वीट मतलब ये गाइस कॉन्वर्सेशन है। शेवंती तो आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो इट्स मत आ, लाइक दैट्स more इज नंबर। rounded story than समझिस some of the stories in Axiomatic, sorry to say. axiomatic डेफिनेटली A मोर देन story द in मैथ। story in 4 numbers. अच्छा, as you guys were discussing some of the stories, na, especially the Yeah. ones where they are messing with the human body, Hmm. I kept remembering the concept of ship of thesis Hmm. अरे because उसका मुझे Yeah. याद आया, we are अरे constantly इन like, लर्निंग टू will बी it be the same or not? नंदिनी, Yeah, yes, yeah. I'm glad you brought Yeah. it up. I'm glad you brought it up. Hmm. Learning to be me में there is a conversation. So उसमें this Hmm. guy who is anti जूल ना, कि मुझे जूल से रिप्लेस नहीं करना बॉडी को, तो उसको हाँ. काउंटर आर्गुमेंट पता है क्या देते हैं कि by the time you are 30 every single cell in your body has been replaced. So why Yeah. not neurons? Hmm. तो brain replace करेगा That's तो क्या ही also फर्क पड़ेगा? that's one of the That's ship also of thesis another का argument. examples मुझे भी also. exactly, या तो मुझे भी Yeah. उसका Yeah. याद आया था तब chip of thesis का, या Hmm. Like I'll identity, read that story. Yeah. whenever या identity वो तो comes पढ़ूंगा into मैं। question, right? कि what exactly makes you? Are yeah uh, are your actions that make you, or are you just there's also this one meme of are you just mecha, पता है mecha droid होता है जापानीज एनिमे, या फिर काइजू, अगर देखा हो काइजू का ऑपोजिट क्या होता है वो इसमें। फिजिक्स नहीं है क्या, वो बता देते, अरे सो गया कौन सा होगा वो। मूवी है वो, पोर्टल वाला काइजू है उसमें, और they fight this big monsters and there are people inside, so basically that they say कि uh, are is a human, uh, is what you're talking, what you're doing, are you the human, or are you just the brain that is controlling this droid of that's sitting करेक्ट inside this, that is sitting inside a skull from this watching everything through अवतार, Pacific Rim, अवतार Pacific में भी Rim, तो वही है। Oh, हाँ Pacific अवतार Rim में में। भी है वो। हम्म, उसका इतना फॉरगेटेबल मूवी है, बोल ही गया मैं।
हाँ, मुझे अवतार याद आ गया पर पैसिफिक रिम नहीं याद आया, इतना फॉरगेटेबल मूवी है वो। येगर बोलते हैं उसको। हाँ, Oh वो जो yeah. ड्रॉइड होता है एरन correct। येगर। तो सेम कर, वो जर्मन ना भी है ना, तो ये था। फिनिक्स का फेवरेट लग रहा है। पैसिफिक रिम पे आगे ना हम लोग उसको पसंद आ घटिया बोल जाएंगे दिया। वो। वो कुछ बोल रहा है तो अनम्यूट करके बोले। वो सो गया है। है ना। नहीं 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 सोया वो, अह, जिंदा हो गया तो पैसिफिक रिम को सब कुछ। हाँ, इनटू डार्कनेस ये डिस्कस नहीं किया, ये बहुत अजीब स्टोरी था देख। A मैंने giant नहीं sphere पढ़ी of या unknown origin jumps between random locations of the Earth's surface and restricts the movement of objects trapped inside in a bizarre way. Very geeky story, very sharp edges, high एक तो concept ये story. किकी इज अ वेरी पंजाबी नेम, लेट मी टेल यू। हाँ, हाँ है है। it's ये खुद पंजाबी पूछ रही है कि है क्या। स्टोरी का कभी नाम दैट तो इज बोलो आवर तो है। सरकाजम। Into darkness, थैंक into यू darkness. फॉर नहीं अंडरस्टैंडिंग। नहीं, इनटू ऑफ कोर्स। डार्कनेस के ऊपर एक स्टोरी है, उसका नाम है द क्यूटी। मैंने पढ़ा है, ये क्या आ गया बीच में ऐसे, Cutie is क्यूटी। also पढ़ने का। द medical क्यूटी story of this स्पॉटिफाई वाला guy. है। अरे उसका एंड बहुत सही है यार। अच्छा, It's फिर it's पढ़ेंगे। about this guy whose partner does not want to have kids, but in that reality, men can also have kids through special procedure, and there is a trial kid available to you that takes your DNA. ट्रायल किड। वाह, शिट हाँ, ऑसम। trial ये kid, सही है। trial child available to you that takes your DNA and injects it into you, and you get pregnant because of that, and the child that comes out of you, right? That you know that it will live till only till only it is 5, right? So, ओके। they say you get, it's for those people who want only the Cute part. those years of the cute part. Actually, that's why it's named cute. The cute part of the child, but they don't want. But this one gets attached to it, obviously, and it also raises the question of when we choose to get pets, you know that they are Yeah. going to die before you are going to. नाइस So नाइस वो नाइस। कंसेप्ट यहाँ को पे भी किसी टैकल ने करता है। वो But देखा है this किसी ने, does नेथन? sound like the people who दिस इज get dogs till they, and they, you know, they keep them till they're cute and then वो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो they हाँ abandon हाँ, them. हाँ लॉकडाउन Yeah, लॉकडाउन में बहुत हुए ऐसे। लॉकडाउन। हाँ छोड़ ही दिए थे। अच्छा, यहाँ भी किसी ने ये देखा है, नेथन फील्डर का द रिहर्सल करके शो आया था एचबीओ हाँ पे। हाँ हाँ, हाँ तो देखा है। उसमें एक्चुअली दे डू इट ना, कि वो ट्रायल औरत वाला। को हाँ बच्चा एक्सपीरियंस करना होता है, एंड द किड, मतलब वो ऐसे करते हैं कि 1-2 दिन में वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, सो नए नए बच्चों के एक्टर हायर करते हैं, ऐसा कुछ। एंड वन ऑफ द हम्म। किड्स, मतलब जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, ही एक्चुअली गेट्स अटैच्ड टू नेथन फील्डर, अरे एंड वो यार वो उसको बेचारा। मतलब बाबा की तरह बोलना। अरे बहुत ट्रिपी एपिसोड था यार वो, एंड इट्स ऑल अ That डॉक्यूमेंट्री, ऐसा was नहीं very मतलब sad. Yeah, नेथन फॉर यू that जैसा नहीं है वो episode. कि मॉक्यूमेंट्री है, ऐसा इट्स एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट्री। सो Yeah. बहुत Hmm. बहुत डार्क जाता है वो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट्री नहीं Somebody है वो, did मतलब this. ऐसा। यार वो अरे पागल द बंदा है वो। And रिहर्सल that करके शो है ऐश्वर्या, बहुत सही शो है यार, you देखना feel ठीक है। so कभी टाइम। bad for that kid at या that ऑफ कोर्स। point. ये मैं हाँ सिर्फ ना। एक क्यूटी का मैं लास्ट थोड़ा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। मेरे को बैड नहीं, मेरे को ये बड़ा ही सिक ये लगता सुनो, है ये सुनो। अरे सीन। देखो देखो। हाँ। क्यूटी का लास्ट पैराग्राफ। Accidents happen. Nobody's perfect. Her death will be quick and painless. Children die around the world all the time. See, there are a lot of answers, lots of sound I can make with my lips while I'm waiting for the urge to pass. The urge to kill us both right now. The purely selfish urge to end my own suffering. I won't do it. The doctors and all their tests might still be wrong. There might still be a miracle that can save her. I have to keep living without daring to hope. And if she does die, then I will follow her. There's one question, though, to which I'll never know the answer. It haunts me endlessly. It horrifies me more than my blackest thoughts of death. Had she never said a word, would I really have fooled myself into believing that her death would have been less tragic?
यहाँ पे खत्म होता है। वाह Thanks. कभी कभी वाह ऐसा प्रोफाउंडिटी ऐसा ड्रॉप कर देता है ना ये आदमी। Most of the writing is like servicing the concept, not servicing the characters. But sometimes ऐसा चाटा मार के जाता है। चाटा मारता है या बढ़िया। तो इनटू डार्कनेस So पढ़ना है, वॉक पढ़ना है, ये भी पढ़ लूंगा। I'll क्यूट complete the हाँ remaining books, सारा ही this हाँ week, मैं भी I पढ़ ही think. लूंगा पूरा वैसे। हाँ मैंने जो भी ये शेयर करता हूँ मेडिकल वाले मोस्टली अवॉइड करना। मेरा आफ्टर अ व्हाइल या फिर स्पेस आउट करना अपना रीडिंग। बट हाई कंसेप्ट वाले पढ़ना। इनटू डार्कनेस it's uh, it's infinite assassin type of thing, but it's not that great. It's high concept like that. ऐसा wormhole आता है कहाँ पे, and this man goes into the wormhole and his job is to try to save people from that. तो वो imagine अच्छा करने में थोड़ा ट्रिप करोगे। इससे मेरे को एक क्वेश्चन आया, मतलब ये मैं कल सोच रहा था राइट, कि टेड चियांग का बुक है अगेन साइफाई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द स्टोरी ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स। सो उसमें स्टोरी ऑफ योर लाइफ इज अराइवल का प्लॉट ना। Yeah. सो एक्सियोमेटिक का भी उन्होंने, मैं ऐसा सोच रहा था कि हाउ डू दे डिजाइन की कौन सी स्टोरी बुक में कहाँ रखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल स्टोरी ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स विद द टावर ऑफ बेबल वाला स्टोरी, इट वाज रियली रियली गुड। फिर बीच में ये आता है स्टोरी ऑफ योर लाइफ विच इज द टिटुलर स्टोरी, अच्छा होने वाला है लोगों को पता है। एंड टुवर्ड्स द एंड आई हैवंट रेड इट टिल द एंड, सो आई एम वेरी क्यूरियस। एंड हियर आल्सो आई नोटिस्ड अ सिमिलर ट्रेंड कि द फर्स्ट स्टोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, द इनफिनिट असैसिन। फिर जो हाँ टाइटल वाला स्टोरी है वो भी बीच में डालेंगे कहीं, ताकि लोग आके एटलीस्ट वहां तक पढ़े। टाइटल पढ़ेंगे। एंड हाँ इफ इट इज बाय डिजाइन, मतलब कैसा होता होगा ये डिजाइन, ये मैं सोच रहा था कल ऐसे ही कि हाउ उसका डू भी दे रहता डिजाइन है की like if even if you talk to anthology, I talked to a few anthology people who have published their short stories of anthologies, and people who are publishing their have published their poetry collection. So they follow, sometimes they follow a theme कि ये स्टोरी से ये जाएंगे, ये स्टोरी से, बट दे ऑल्सो नो कि कोई इसमें नहीं पढ़ेगा लाइन में, कोई ऑर्डर में there नहीं won't be पड़ेगा। people who will read it in order. So they keep the strongest story start में ही, strongest जो है वो start होता है, and बीच में ये आ जाएगा अपना title story, बीच में आ जाएगा. So these are the two stories at least people will read, the first two and the title story, and the last one is करेक्ट also करेक्ट या most people keep the last one strong because when people read a book they want that finality of reading the last book even if फाइनल they haven't read करेक्ट। बीच में का. Story of my life नहीं मैं एक वो बहुत सही है यार, मुझे उसमें से एक भी खराब नहीं लगा था जो सो फार आई हैव रेड। 7-8 पढ़ी है मैंने स्टोरी ऑफ योर लाइफ, it's good. बहुत I think सही Exhalations overall is better than Story of your life. Exhalations पढ़ना, but ओके। I like Story of a life too. उसमें यार एक डिवीजन बाय जीरो करके है, बहुत सही लगा था मुझे वो स्टोरी, मैं डर गया था वो स्टोरी पढ़ के एक्चुअली, मैथ्स के बारे में। सो इट्स एनीवेज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो बहुत मजा आया था वो पढ़ के। चलो एक का एक्सहेलेशन ना तुमने बोला, Exhalations, हाँ. I haven't read the last story. आधा ही पढ़ा मैंने इसका. वो किसी ने पढ़ा है? कौन सी? कौन सा? लास्ट स्टोरी, बुक की लास्ट स्टोरी नहीं, मैं आधी ही पढ़ी है मैंने वो बुक. नहीं। अनस्टेबल ऑर्बिट से क्या? नहीं नहीं, कौन सा नाम क्या है उसका? अनस्टेबल ऑर्बिट्स. कंटेंट्स पे जाता हो? अनस्टेबल ऑर्बिट्स ही है. नहीं मेरे, हाँ अनस्टेबल ऑर्बिट्स इन द स्पेस ऑफ लाइज, वो नाम तो बढ़िया लग रहा है। नाम सही है, नाम सही है. स्पेस ऑफ लाइज, ओके ठीक है, पढ़ूंगा तो मैं इवेंचुअली सारी, अब आधे तक आया ही गया हूँ, एग्जैक्टली। देखते। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में वो अब फ्रीडम रहता है कि यू कैन ड्रॉप एंड पिक एंड चूज wherever you want. So yeah guys, almost 2 hours into the mix. और कुछ बात करना है वो ऐसा ओवरऑल प्लॉट के बारे, बुक के बारे में क्या लगा? Was it a good choice and was it something that was out of your बहुत अच्छा था। comfort zone? एग्जैक्टली।
Yep. यार वो लर्निंग टू बी मी के बाद मैं ऐसा खो गया था, पता है। 15-20 मिनट के लिए मैं बहुत सोच रहा था। हाँ, मैं So सब छोड़ दिया, ऐसा बैठ के थिंक कर रहा हूँ कि व्हाट आई जस्ट सेड हम्म, ऐसा। तो वो बहुत सही लगा मुझे। मतलब कुछ कुछ मैं स्टोरीज ये है यार वैसे। बुक कभी नहीं उठाती। हाँ बोलते चलो कंप्लीट कर। हाँ नहीं नहीं नहीं, हो गया मेरे को। नहीं मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये बुक कभी नहीं उठाती एंड आई कैन स्पीक फॉर श्योर देवल भी कभी नहीं उठाती। उसने गारंटी। पढ़ी है पूरी। हाँ उसने Yeah. पढ़ी है पूरी, ओसीडी पूरी है उसने पढ़ी है। हम्म, तो नहीं उठाते क्योंकि साईफाई इज नॉट आवर कंफर्ट जॉनर, स्पेशली नॉट माइन। पहली बुक पढ़ने, पहला स्टोरी पढ़ने के बाद तो आई वाज सो कंफ्यूज्ड। आई वेंट डाउन द रेडिट सब होल, पूरा रैबिट होल, अच्छा, फुल रेडिट। ठीक है ना, हाँ हाँ, कि क्या हुआ कैसे हुआ। क्या हुआ। देन आई रियलाइज अगर मैं ये करूंगी तो एक महीने में एक स्टोरी पढ़ पाऊंगी। हाँ तो हाँ। मैंने कहा बस थांबा, डीप ब्रेथ, रीड, डोंट थिंक टू मच। हाँ या तो फिर सेकंड स्टोरी थोड़ी बोरिंग थी, आई थिंक क्या थी याद नहीं मुझे, क्योंकि मैं तब 100 या बहुत पक रही थी तो मेरा 100 बहुत। लाइट ईयर डायरी थी सेकंड। नहीं वो नहीं थी, उसके बाद वाली, उससे पहले या यूजिन उसके यूजिन बाद तो में बोरिंग फर्स्ट थी। यूजिन वो स्टोरी। बच्चा वाली हाँ बहुत बोर पता था थी, वो। मेरे को नहीं पसंद आई। तो उसमें तो मेरे को बहुत ब्रेक, मेरा बुक में वो मैं वाली तो ऐसा स्टोरी ना बहुत इंटरप्टेड थी। डिप हुआ मेरा, वो 100 लाइट ईयर के बाद मेरा जो डिप हुआ यूजिन में, क्या हाँ है, क्या तो वो पढ़ लिया। थर्ड स्टोरी। फिर यूजिन के बाद तो कैरिस वो आया, मतलब अरे यार क्या। और कैरिस खत्म ही नहीं हो रहा था, इतना पेरेंट्स लंबा तो था। यार, हाँ ना, मतलब हाँ आई वाज और लाइक कि फर्स्ट, कुछ पॉइंट मिल जाए उसको, बट हाँ हाँ ना, एंड तो ऐसा उस है। टाइम वो तो था। ऐसा लगा था कि यार क्यों मैं पढ़ क्यों रही हूँ। हाँ, फिर मैंने बाद में पढ़ा, देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग, सो इट टुक मी एटलीस्ट 3-4 स्टोरीज, गुड स्टोरीज, हम्म। टू रियली स्टार्ट एंजॉयिंग इट। कैरिस ने बहुत लोगों को तोड़ा है यहाँ पे। निखिल भाई हाँ कैरेस के बाद लोगों ने छोड़ ही दिया सीन। छोड़ ही ये दिया। क्या वो पढ़ टाइम। लिया। मैं हाँ डालना चाहिए यार था, आई मैंने थिंक। छोड़ दिया. I wanted हाँ हाँ to get into the story and kill that chimera. I was like, let me put an हाँ, end लाइक to this. फक दिस कैमरा, फक दिस गाय, फक दैट बिलियनर, जो भी है, मर जाओ सारे। क्या हाँ है ये। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। Also na, also the choice of animal for the hybrid, मतलब I was not able to हाँ feel हाँ for हाँ हाँ। नहीं हाँ, मतलब मतलब मरे तो ठीक है, मर जाने दो ऐसे अच्छा था। correct, मतलब I was not capable of that empathy ना, तो वो हो ही नहीं पा रहा था, मतलब वही ना, हाँ, ऐसा pity डॉग नहीं वगैरह तो लेते तो। जबरदस्ती मेरे दिमाग में मैंने जैसे मरमेड होता है ना, वैसे लायन के साथ इमेजिन किया। ये था, ये एग्जैक्टली। दे वर ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस देखो ना, पिक्चर। कैन यू ये सी? देखो ना, मतलब दिखा, ये अरे सब, रे, अरे लेट मी गेट टू माय फोन। दे वर मतलब ट्राइंग टू वही क्या तो। रिक्रिएट सोने दिस से पिक्चर। पहले ये सब नहीं देखना मेरे मैंने को. देखा है पहले बट मैं भूल गया था। अब मुझे वापस अच्छा, से मैं नहीं याद भूल आया। गया। देखना मेरे को. मैं बोला पेंटिंग भी घटिया है, क्या था इसमें, उसको क्या ही रिक्रिएट है करके। ये। और वैसे भी हमको क्यूट एनिमल को ही बचाना है ना, हम तो एस्थेटिक्स के चौधे हैं, तो हाँ हमको सिर्फ क्यूट एनिमल्स बचाने हैं। हम तो आई एम ग्लैड, the, आई एम the ग्लैड दिस highlight, इज ऑन रिकॉर्ड, yeah, aesthetics का चौथे is on record. ऑन रिकॉर्ड। But yeah, Keres नहीं, broke a lot काफी of अच्छी people. चॉइस. या या मजा आया। अभी यार मेरा हाँ तो बट सोने यार जाओ बाकी नाइस सोने का का एक चॉइस स्टोरी फॉर पढ़ के। श्योर, परफेक्ट या चॉइस। बिल्कुल बहुत थैंक्स थैंक्स। लाइक मैं तो सिर्फ लाइक अगेन ऐश्वर्या ऐसा जैसा बोली। पिक किया। मुझे ये बुक के बारे में पता भी नहीं चलता, इवन दो आई एग्जैक्टली आई एम वेरी मच हम्म, इनटू साईफाई, आई स्टिल वुडंट हैव कंसीडर्ड, मतलब मेरे क्योंकि मतलब वो बॉल पार्क टॉप में भी नहीं साइंस में आते। नहीं आती ना वो। या लाइक इट्स नॉट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो तुम साइफाई स्टार्ट हाँ करोगे तो देर आर फ्यू बुक्स लाइक बिल्कुल 1984 एंड, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो ये अपना ये आएगा, थ्री बॉडी प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दो स्टोरीज, फिर देन यू गो फिर इनटू शॉर्ट आगे स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी में टेट टेट चियांग, चियांग आएगा। कैन लियो आ हाँ जाएगा। हम्म, और नीचे नीचे जाओगे तो बहुत बहुत डीप है उसका। एक इसका है, एसिमोव का कलेक्शन है, लाइक a lot of यस, different जिसमें authors. मेरा पूरा बचपन था. 100 short I stories का have क्या? read, yeah, that and the Foundation series has नहीं, फाउंडेशन सीरीज तो आई हैव डिफरेंट, आई हैव ओपिनियंस ऑन द फाउंडेशन सीरीज, तो बाद में बात I करें। have no व्हाट आर द opinions. ओपिनियंस? अरे I विश्वेश आई was डोंट, taught विश्वेश to it ऑल्सो like the हैज। Bible, रिकॉर्डिंग बंद guys. कर लो, रिकॉर्डिंग बंद कर लो, वैसे ही इधर उधर की बातें मैंने करते रहते रिकॉर्डिंग हैं मेरा बंद नहीं, कर दी। मेरा कंडीशनिंग है आइजैक एसिमोव का, ठीक है. ओह उसमें नाइस। चॉइस आई कुछ नहीं आई था. आई डोंट लाइक फाउंडेशन, मैंने मतलब मैंने क्या पता है पका मैंने उठा, मैंने बहुत बोर हुआ फाउंडेशन मुझे, सॉरी। मैंने मैं बहुत फाउंडेशन लेट मैंने था। तो पढ़ाई। पढ़ी ही मैंने नहीं है, मैं तो एप्पल टूस का शो देखा है। शो अरे वो मैंने बकवास बहुत है। ना नाइस है. मैंने पढ़ी नहीं थी।
मैंने पढ़ी नहीं थी फाउंडेशन, और आई न्यू कि विश्वेश ने पढ़ी है, तो मैंने हाँ विश्वेश को टेक्स्ट किया एक बार, मुझे याद है, मैंने हाँ बोला आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग फाउंडेशन, सो हाँ शुड आई रीड इट? तो विश्वेश का एक सेंटेंस रिप्लाई था, यू हैव रेड बेटर साइफाई। आई वाज एक्चुअली लाइक हाँ, ओके। बिकॉज एसिमोव सेम, छवि, I don't know if you agree or not. Concepts really good. Writing, Yeah, that's how I was taught. Like a the writing textbook. is There's no uh, part of storytelling, yeah. characters, There's no any story, of no it characters, nothing. देखो Look definitions at की his तरह भाई ideas, तो guys. Look at his ideas. CBSE की वो तरह ही है. याद है. हाँ, Yeah. वो 3 laws of robotics, iRobot भी उसके स्टोरी पे बेस्ड है. Yeah. नहीं, I'm talking हाँ about this book. 100 short stories का collection है. 100 short stories of Asimov, yes. Not of Asimov. Of other people. और Asimov के 10-12 stories है उसमें, but there are a lot of जॉर्ज आर आर मार्टिन की भी है. One of his first stories 70s में लिखी हुई. तो देयर आर गुड, रियली गुड स्टोरीज, और छोटे छोटे स्टोरीज है. एक स्टोरी पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो वो पढ़ना. वो ईपब हाँ, भेज देता हूँ मैं. ईपब नहीं ओके भेज देता हूँ अरे इफ दिस इज एक्सेलेशन रिकॉर्डिंग. और खरीद भेज लेना दो वो. भाई प्लीज. खरीदनी रिकॉर्डिंग बंद है. कर दे भाई ताकि मैं खरीद लूं. नहीं, मैं जस्ट सब लोग एस्थेटिक के अपना अपना खोजे हो तो फाइनल खरीद ही लो। फाइनल ये पोल देना बुक के बारे में, फिर अपन रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं. निखिल भाई. या वही द कैरेस तक ही जा पाया मैं, उसके आगे नहीं जा पाया. हाँ बट ये जरूर है कि आई वुड नॉट हैव पिक्ड दिस बुक, वही मतलब. एंड इट इज मुझे उन 4 स्टोरीज में भी ये समझ में आया कि ही वॉज एबल टू बिल्ड 4 वर्ल्ड्स, और उसकी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड है कि ही कुड नॉट हैव केप्ट ऑल दी स्टोरीज इन वन वर्ल्ड. सो दैट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम कि उसके पास इतने आइडियाज हैं कि ही कैनॉट मेक अ कोहेरेंट वर्ल्ड विथ ऑल हिज आइडियाज. तो वो पता नहीं उसने और भी काम किया होगा, बट साइफाई शॉर्ट स्टोरीज में वर्ल्ड बिल्ड करना is much tougher than making a full world, because वो. या और मैं जो 4 कहानियां भी पढ़ी और बाकी तुम लोग की बातें भी सुन रहा हूँ, the themes of all the worlds are so different from each other. Sci-fi just being a common thread, उसने पेल दिया है मतलब all over philosophy. So yeah, मतलब you will like पढ़ने it though. When he goes into philosophical discussions yeah, of what it actually yeah, means to be human, or am I yeah, am I just a flesh and blood and bones, or वैसा, or am I the thinking, feeling robot इट्स mind ऑन that मी is यार, इट्स ऑन moving? मी. Yeah. वो पढ़नी चाहिए थी मुझे, एंड डेफिनेटली वो और पूरी Like, करूंगा मैं. even if you don't read, just मजेदार. read the ones I have marked: safe deposit हाँ. box, kidnapping, learning to be me. Like those are the ones वो like वाला top tier कंसेप्ट मुझे for me. बहुत अच्छा लगा. ही वेक्स अप इन अ न्यू बॉडी एंड ऑल दैट. उसका नाम सेफ क्या था? That's डिपॉजिट. safe सेफ deposit सेफ box. डिपॉजिट डिफॉल्ट, सेफ डिफॉल्ट। ठीक है, वही उठाता हूँ पहले. वो वो बहुत पहले सही है. या हाँ. Like वो it अच्छा goes लगा। कोई like बहुत सही लगी. Axiomatic उसके पहले आता है, but if you jump to safe deposit and नहीं, go वो back to तीनों भी मतलब बैंगर है, मतलब एक्सियोमेटिक इज गुड, हाँ उसके बाद सेफ डिपॉजिट आता है, और उसके बाद लर्निंग टू बी मी आता है. सो ये 3 हम्म. अगर ऐसा कलेक्टिव में पढ़ोगे ना, तो भी बहुत अच्छा फील आ जाएगा. yeah, डन डन. like we have went to gone through the whole thing, और बता रहे हैं कि ये बेस्ट फर्स्ट है, ये पढ़ लेना हो जाएगा अपना. कोर्स खत्म हो जाएगा. हाँ, इसमें क्यूटी हो भी जाएगा. पढ़ लेना, just because of that end, the end paragraph that I read, right, just to get to that feeling. मस्त है. या अभी हॉलीडेज आ रहे हैं, व्हाई नॉट. या यस. और अपना और नयन आए हैं क्या? नयन बुक पढ़ी है क्या? नहीं, वो तो उन्होंने पहले बोल दिया नयन था. पहले बोले वाइब्स के लिए आया. तुम लोगों को थोड़ा वाइब बर्फ के की लिए आए. सैर करा देते हैं. अच्छा, दिखाओ दिखाओ. ओ नाइस. दिलजीत, नंदिनी, मुझे और छवि, ठंड लग गई है. डू यू वांट टू It's गो fine. फर्स्ट नंदिनी? इतना क्लियर स्काईज दिख के भी बर्फ में दिमाग में इनकॉन्ग्रुएंस होता है थोड़ा. बर्फ कैसे हो सकता है? धूप है और क्लियर स्काईज है, ठंड कैसे क्या हो सकती हाँ ना. नहीं, बहुत एक्चुअली ठंड ये लग गई कचरा है. है. ये मतलब ये बर्फ है जो काली हो चुकी है. ब्लैक आइज. मिट्टी अरे मडी हमारे लिए स्लश उतना है. काफी है. I know. हाँ ना. ये देखो ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम देखो ना, बर्फ को कचरा बोल रहे हैं.
फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है ये, हम लोग रखी है, इस पे चलना मुश्किल है, लोग जितनी अपनी हड्डियां तोड़ते हैं। ठीक है अपन करो ये क्लोज करते हैं जल्दी। नंदिनी जल्दी जल्दी बोलो, हाँ, ठीक कैसा है, लगा, मैं क्या बोलूं? लगा? हाँ अच्छा, चाहे बोलो। पहले नंदिनी। हाँ, okay. So the thing that I want to say is that I really like the book. I think that I understand characterization is storytelling here, but I like books which, in that sense, there's very strong visualization of science, and it's very philosophical to its core. And that intersection is something I like, and I think these books can be very good for people who are just interested in science to have like a to be part of the conversation without going too theoretical. So because it's still very strong visualization, so I actually liked it. I understand कि since your approach can be from the idea of how it stands as a story, like the writer idea of it, but just for like just as an aid to science, I think it's a fantastic book. Nice. Yeah. Some of the stories are as an aid to science and also as an aid to philosophy. Philosophically, Yeah, so मैंने Yeah. नीशे तो मैंने इसके बाद I हाँ read हाँ this, वो I बोला read था नीशे रेस, Hmm. existentialism, identity of all of it. Free will. Even the all of it. ideas Yeah, of free will. Yeah, sexuality I found very sexuality. progressive. Yeah, it's the writing may not be that because all the characters also sound male, even if he's writing Yeah. from. But ठीक है, it's not, you can't do everything. Yeah, that's I think okay. concept में But exist हो सकता है. yeah, the philosophical part was interesting for me, and that's also why I like the first two stories of the four I read. And this was my first sci-fi. So that Oh, Yeah. nice. Yes. Nice. that Axiomatic way I took your was sci-fi flower. Wow. But I'm hoping to read the ones that you mentioned, and I'm hoping that I'll like them as much as the first two. But otherwise, yeah, this is something new for me, so I'm happy that I explored something, new. Yeah. Nice. Yay! Nice. ठीक है, we'll close this unless दिलजीत भाई आपका हो गया होगा काम. We're not saying what काम it is on record. वो बाद में करते हैं discuss. So this was the book. पौधे लगा के हो गए होंगे. I'm really Yes. glad I picked it. It was by chance and डांट खा के मैंने book pick किया, but I'm really glad that I Love by picked it. chance. And what is the book for December? वो Black 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 flamingo. Flamingo. निखिल जी हाँ जी, Yes. ब्लैक फ्लेमिंगो. बताइए. That was your clue. Q. हाँ. Yeah. Okay, so चलो. So Now we read December 94 pages of मतलब Black Flamingo. करेक्ट. सो दिसंबर में आधा तो अपना निकल चुका है. हम लोग मतलब आई एम नॉट वेरी डिसिमिलर टू सुमित. मैं भी 15 जनवरी तक डिस्कशन करूंगा. सो आपके पास एक और महीना है. तो Nice. yes. या And मैंने खुद ने वो ईपब अभी खोल के नहीं देखी है, विच no, आई yeah, मीन द it's a हार्ड short कवर. book, na, from what I've heard. Yeah, it's a छोटा ही Really है ना. beautiful And the cover. cover. क्या सही cover है. अरे Jinx. So So this is the book for the month for December. Correct. So the Nice. choice is because personally मैंने non-binary characters के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है. You guys might have already read so much about it, but वो सबके साथ में पढ़ना चाहता था और सबके साथ बात करना चाहता था. Maybe a small book, but मज़ा आएगा, डिस्कशन करेंगे. We'll try to understand. Nice. So yeah, Very cool. this is my pitch. Cool. This is my Yay. pitch. Oh. So with बढ़िया. that, I'll just stop the recording. Thank you everyone who joined. This was Thank you. Pineapple Elachi Book Club, and I was your host, Sumit.